Pankaj Chaudhary, bills for consideration and return. The appropriation number 2 Bill 2026, the Finance Bill 2026. Now Sri Man Pankaj Chaudhary to move motion for consideration of the Finance Bill 2026. सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सरकार का वित्तीय प्रस्तावनाओं की प्रभावी करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Thank you. Motion moved. Where is Finance Minister, sir? I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Sir, where is the Finance Minister? He is the Finance Minister. Finance Minister. He is the Finance Minister. He only introduced. We respect him, but where is the Finance Minister? He is the Finance Minister. Cabinet Minister. That is different. He is the Finance Minister. Already Cabinet Minister Rajya is here. If you want, he is here. See, Cabinet is combine of all the things, not one minister. When Rajya is the leader, he is a Cabinet Minister. Another Cabinet Minister also there. Therefore, Sri Ram, you know very well. You also Cabinet Minister. Thank you. Sriman Shakti Singh, go ahead. थैंक यू महोदय। 232 पेजेस का फाइनेंस बिल लेके फाइनेंस मिनिस्टर हाउस के सामने आई है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा, देयर आर नो सीरियस चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर, ओनली टिंकरिंग। सम आईटी रिटर्न टाइमलाइन्स हैव चेंज्ड, some forms are changed. In gold bond, I will demonstrate it will not benefit to the middle class. Some changes in person who are investing from overseas, उनके लिए हैं, और गिफ्ट सिटी इनके लिए ये फाइनेंस बिल में कुछ बातें हैं। सर, मेरे पास, क्योंकि जब कोई बजट पेश होता है उस वक्त एक आंकड़े रहते हैं, उसके बाद में रिवाइज बजट होता है और 1 साल 2 साल के बाद एक्चुअल फिगर क्या है उसका रियल पिक्चर सामने आता है। मैं जरूर कहूंगा कि इसको देखते हुए 2023-24 में इनकम टैक्स रेवेन्यू सर 26% बढ़ी, लेकिन उसी साल में ईयर टू ईयर बेस की ये बात है, और ईयर टू ईयर बेस पे उसी साल में माने 2023-24 में जब 26% इनकम टैक्स की रेवेन्यू बढ़ी, वहीं पे कॉरपोरेशन टैक्स कंपेयर विद जीडीपी और जीडीआर के परसेंटेज में वो कम हुई। माने बड़े लोगों को से जो पैसे आने थे वो ईयर टू ईयर बेस में कम हुए और आम हिंदुस्तानी के टैक्स के पैसे और ज्यादा बढ़े। सर, डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उन दोनों का फासला कम करो। ये लोकतंत्र के लिए एक सिद्धांत होना चाहिए। इस सरकार में ये नहीं है। इस फाइनेंस बिल में सर 2047 तक गिफ्ट सिटी को रियायत दी गई है। कौन रहता है उस गिफ्ट सिटी में? कहां है वो गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में है। कोई आम नागरिक के लिए वहां जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की ऑफिस और उनकी जगह जहां गिफ्ट सिटी में है, ये सरकार उनको गिफ्ट दे रही है, उनको रियायत दे रही है। आपको किसान नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई से परेशान वो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहा है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि 232 पेज के
इस फाइनेंस बिल में एक जगह भी कहीं महिला के लिए कुछ भी नहीं है। महिला वित्त मंत्री होते हुए भी देश की महिला नहीं दिखती है, पर वो गिफ्ट सिटी दिखता है, क्योंकि बड़े लोग हैं ना वहां पे, वो चंदा देने वाले हैं, वो आपको आपके हर हुक्म की तामील के लिए जो जरूरत है वो देने वाले लोग हैं, और इसलिए गिफ्ट सिटी को वहां फायदा मिला है। सर, गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, किसी और का नहीं, गुजरात गांधी का गुजरात है, और इसी गांधी के गुजरात में प्रोहिबिशन है, नशाबंदी है। पर गिफ्ट सिटी में सरकार ने स्पेशली छूट दी है कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होते हुए भी आप वहां दारू पी सकते हो, गिफ्ट सिटी में प्रोहिबिशन नहीं। सर, यहां पे एक और रियायत दी गई है, ओवरसीज बाहर से कोई आएगा, डेटा सेंटर लगाएगा, 2047 तक उसको टैक्स में रियायत दी जाएगी, ये फाइनेंस बिल कहता है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्यों आप ये कर रहे हो? क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पे क्लियर नहीं है कि वो बाहर से आया हुआ जिसको आप रियायत देते हो, वो मेरे देश को, युवाओं को कितनी नौकरी देने वाला है, मेरे देश के लोगों को कितना फायदा होगा? सर, वक्त बदलता है। एक वक्त था जब कोई पशुधन जिसके पास था वो सबसे बलवान माना जाता था। फिर एक शस्त्र का जमाना आया कि शस्त्र जिसके पास ज्यादा है वो बलवान माना जाता था। धन संपत्ति का वक्त आया, जिसके पास ज्यादा मिनरल्स है, भूगर्भ में ज्यादा संपत्ति है, वो धनवान माना जाता था, वो ताकतवर माना जाता था। लेकिन बदलते वक्त में, आज के दिनों में, जिसके पास डेटा ज्यादा है वो डेटा वाला है, वो सबसे ताकतवर और वो सबसे ज्यादा फायदा ले सकता है। क्या आपका कोई ये, इस देश, हमारा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, मेरा भारत महान, हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और वही दुनिया के देशों की, बाहर के लोगों की नजर है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कंज्यूमर्स है तो भारत में है, और इसका डेटा अगर मिल जाए तो फायदा हो जाए। अब ऐसे लोगों को आप ला रहे हो, और उसके सामने मेरे देश की जो युवाओं की स्थिति है। सर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अभी आई, 67% ग्रेजुएट बेरोजगार है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है। ग्रेजुएट लोग 67%। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम किसी और को फाइनेंस बिल में रियायत देने से पहले मेरे देश के इन युवाओं के रोजगार की चिंता करें? सर, हाई नेटवर्थ इंडियन बाहर से आके पैसे लगाएंगे, और जो एक इंपॉर्टेंट चीज डेटा है, उनका सेंटर यहां बनाएगा और बनेगा, और इसके लिए ये व्यवस्था यहां इस फाइनेंस बिल में की गई है। इनकम टैक्स, कस्टम्स, इसके अंदर सर ये फाइनेंस बिल में कानून में चेंजेस ला रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला रहे हैं, माने कि पश्चात असर से। कानून की परिभाषा में कहा जाता है, दिस powers are with the government but it shall be used sparingly। बहुत ही जरूरत कभी कभार पड़ जाए तभी कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पश्चात असर से लागू होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए, आपके कानून के होते हुए आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पश्चात असर से उस कानून को बदल के वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल रहे हो। ये शर्मजनक बात है कि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सर, सोयाबीन इंपोर्ट ड्यूटी 0। सर, ऑयल, सोयाबीन खाने का इंपोर्ट ड्यूटी 0।
सर मेरा किसान, मेरे भारत का किसान कैसे कॉम्पीट करेगा? देखना होगा आपको। अमेरिका में जाके मैंने देखा है, वहां के किसान को, इनके पास इतनी लैंड है और सरकार इतनी सुविधा देती है, इतने बड़े बड़े मशीन्स है, और वहां पे किसान जो है वो जो यील्ड लेता है, इसकी जो लागत लगती है, इफ यू कंपेयर विथ आवर फार्मर्स, अपने किसानों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमारा किसान उस कंपटीशन में टिक नहीं सकता है। और अगर इसी तरह से आप अमेरिका के सामने झुकेंगे और ट्रीटी करेंगे, या हमारा फाइनेंस बिल में हम ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगानी चाहिए उसको जीरो करके रख दोगे तो देश का किसान सरवाइव नहीं हो पाएगा। देश का किसान आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है। आज आत्महत्या क्यों किसान करता है? किसी भी लाइव क्रिएचर को, किसी भी जिसमें जीव है, उसको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं होता है। वो किसान जब आत्महत्या करता है तो हमें इसको सोचना होगा। सर, जो सेस और सरचार्ज, मैं जानता हूं वित्त मंत्री जी आएगी, अपने जवाब में कहेगी कि सेस और सरचार्ज तो संविधान से मिला हमारा अधिकार है। ये हाउस है हमारा जो राज्यसभा, संविधान के हिसाब से इसलिए बना क्योंकि उस वक्त संविधान बनाने वाले महान आत्माओं ने तय किया कि राज्यों का इंटरेस्ट कौन देखेगा, हु विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, और इसीलिए राज्यसभा बनी। और उसी चर्चा में तय हुआ कि राज्यसभा अपने स्टेट का इंटरेस्ट देखेगी, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को अन्याय ना हो। महोदय, सेस और सरचार्ज लगा के पैसा जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। और अगर कोई भी टैक्स के रूप में सरकार, केंद्र सरकार लेती है तो उसमें से स्टेट को अपना हिस्सा मिलता है। वित्त मंत्री जी कहेगी कि मेरा तो ये अधिकार है, मैं लेती हूं, कानून है, ये है। संविधान बना तब उसकी डिबेट को देखिए, उसमें कहा था दिस आर दी पावर्स बट शैल बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेरिंगली। वो डिबेट का एक हिस्सा है, आप उसे भूल रहे हो। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स है। सेस और सरचार्ज स्पेसिफिक काम के लिए लिया जाता है, कानून है, आपको उसे अलग अकाउंट में रखना है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? कंसोलिडेटेड फंड में उसको डाल देते हैं। सेस अगर स्वच्छ भारत के लिए देश की जनता ने दिया तो स्वच्छ भारत में खर्च हो लिमिटेड और जगह पे फंड डाइवर्ट हुआ है। ये कोई मेरा एलिगेशन नहीं है, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी कहती है कि सेस और सरचार्ज का पैसा आप गलत जगह पे यूज कर रहे हो। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो इस फाइनेंस बिल में है। पर्सनल यूजर्स इंपोर्टेड सेस CTH 9804, उसमें टैक्स कम किया है। व्हाट इज दिस CTH 9804? बाहर से जो आते हैं उसके साथ जो सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स कम कर रहे हो। कौन सी चीजें आ रही हैं? जो चीजें हमारे देश में मिलती है। कौन सी चीजें हैं? जो हमारे MSME बना रहे हैं, वही चीज यहां मिल रही है। और कौन जाता है बाहर से ये करने के लिए? क्या कोई आज के दिन में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये कर सकता है? उनको कोई फायदा नहीं। सर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जीरो टैक्स आज के फाइनेंस बिल में कर रहे हैं। सर, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए? अगर आप सारा क्रिटिकल मिनरल्स बाहर से जीरो टैक्स में लाओगे, हु विल इन्वेस्ट हियर? कौन रिस्क लेगा?
क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आराम से मिलने वाला नहीं है, उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आप इसके ऊपर जीरो टैक्स कर दोगे तो कोई भी हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल्स है इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और इससे फायदा नहीं, राष्ट्र का नुकसान होगा। सर, ये एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि ऑयल एंड गैस की बात। सर, हमारी सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट थी। बाहर से इंपोर्टेड क्रूड 77% आता था। आपकी सरकार में इंपोर्टेड क्रूड 89% हो गया है। ये क्यों हुआ है? हमारे पास ओएनजीसी है। बहुत मेहनत करके आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आई हुई सरकारों ने इसको ताकत दी और हमने हमारी भूमि से क्रूड निकालने के लिए पूरी मेहनत की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई विल अगेन कोट, जो कुआं बनता है जहां से ऑयल और गैस निकलता है, उसके लिए टेक्निकली यह कहा गया है कि टू मेंटेन हेल्थ ऑफ दैट वेल, उस कुएं की हालत ठीक रखने के लिए ऑयल और गैस निकालते जाओ, उसके साथ उसे पानी और केमिकल से रिचार्ज करते जाओ ताकि और ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस आपको मिलेगा। अब सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार आने के बाद जो कुएं की हेल्थ के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो कुआं था उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो काम होना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। पानी की सड़ी हुई पाइपें, पानी गया नहीं, रिचार्ज हुआ नहीं, आपका ऑयल एंड गैस मिलता था वो कम हो गया और आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। सर, एक वक्त था गुजरात में जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकार का आमदनी देने वाला कमाऊ बेटा जीएसपीसी था। सर, एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि केजी बेसिन में मैं ऑयल और गैस ढूंढ लूंगा। सर, केजी बेसिन में 51 वेल किए, ऐसा कहा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा मित्रों 20 टीसीएफ ऑयल एंड गैस मिल गया है, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा, पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा। वीडियो है, मैं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैं भी खुश था, मैं गुजराती हूं, कि अगर 20 टीसीएफ मेरे स्टेट में मिल गया, मेरा स्टेट मालामाल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा साहब जहां तेल के भंडार है वहां पर भी 20 टीसीएफ माने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा आप एक ही अथॉरिटी है जो तय कर सकती है, सच कह सकती है, वो है डीजी हाइड्रोकार्बन। आई रोट टू डीजी हाइड्रोकार्बन, मैंने आरटीआई भी की कि कितना मिला गुजरात को। डीजी हाइड्रोकार्बन का जवाब आया कॉमर्शियली वायबल जीरो, एक बूंद भी नहीं। और एक और कहा जाता है कि 20 टीसीएफ मिला। सर, कैग ने लिख के दिया 17,000 करोड़ मेरे गुजरात के उस केजी बेसिन में डाला, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। और वही जीएसपी के कुएं, वही मुख्यमंत्री यहां आ गए तो वो सारा दे दिया ओएनजीसी को और जीएसपीसी का वो मरा हुआ। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी जवाब दे मुझे, मैं माफी मांगूंगा मैं गलत होगा तो, कि गुजरात से आपने वो केजी बेसिन के 51 वेल लिए, उसमें से कितना ऑयल और गैस निकल रहा है उसका फिगर दीजिए। क्योंकि कहीं कमेटी की बात तो मैं नहीं कर सकता, तो पीएससी में मैंने पूछा था, कुछ नहीं निकल रहा है। क्या ये इस तरह से सरकारें चलती है? सर जीडीपी की बात करते हैं। अब ये एक नया स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर आप पहले वाले को नीचा दिखाना है, दो होता है ना, एक लंबी लाइन होती है, कोशिश करो कि मैं उसके लंबी लाइन करूं, नहीं, वो पहले वाले की छोटी कर दूं ताकि मेरी लाइन लंबी दिखे। इस कंपटीशन में
सर जीडीपी की सीरीज रिवाइज कर दी, माने जीडीपी की गिनती की जो सीरीज थी ने वो सीरीज ही बदल दी और जीडीपी बड़ा दिखाओ। सर इनके ही एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा फ्रॉम 1 to 1.5% जीडीपी इज इन्फ्लेटेड। गलत तरीके से आप जीडीपी का रेशियो दिखाते हो और ये कहने वाला आप कहते हो विकसित भारत। सर कहने से, लफ्जों से कुछ नहीं होता है। मेरे देश में आज पर कैपिटा $3,000 है पर कैपिटा, और जिसे डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश है, वहां $14,500 पर कैपिटा है। कहां 3,000, कहां 14,500। और आप इसको ठीक करने की बजाय सिर्फ अपनी पीठ पे अपनी शाबाशियां देते रहेंगे हम, तो सर इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। सर कभी कभी ये लफ्ज वित्त मंत्री जी करती है ट्रस्ट बेज। अरे ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है आपका टैक्स स्ट्रक्चर। ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है। लोगों को पूछिए, जाइए कि कितनी तरह से उसको परेशान किया जाता है, चाहे कस्टम हो चाहे जीएसटी हो, और उसकी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। सर जीएसटी में रिफंड लेने के लिए अभी मुंद्रा पोर्ट तो उसका एपिसेंटर है, पूरा नीम के पत्ते भरे हुए थे, उसके कंटेनर पकड़े के। नीम के पत्ते क्यों, क्या जा रहा है, कूड़ा भरा था पूरा। बोले ये बिल्टी क्या थी कि हम टोबैको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे जो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा वो कूड़ा वहां फेंक देंगे, और जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए और कोई अच्छा ऑफिसर आ गया तो उसने, मैं सर आई विल कंक्लूड इन 1 or 2 minutes। Okay. सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ये इन चीजों के ऊपर आपको देश में क्या हो रहा है और बाहर क्या है उसको अगर हम देखेंगे नहीं। सर टीसीएस राइट एंड एलआरएस, सर बाहर आप शादी करने जाओ, ग्रुप में जाओ तो 20% टैक्स था, वो कम करके इस फाइनेंस बिल में 2% लेके आया है। मेरा भारत महान, मेरे देश में अगर आपको स्नो चाहिए आप जाइए जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, आपको बर्फ वर्षा वहां पे मिलेगी। आपको अगर कहीं दरिया किनारा चाहिए, गुजरात से लेके पूरे भारत में आपको साउथ इंडिया में पूरा दरिया मिलेगा। आपको पहाड़ियां चाहिए, आपको रेगिस्तान चाहिए, आपको फॉरेस्ट चाहिए, जो चाहिए वो मेरे देश में है। अगर कोई पैसे वाले लोग शादी करने के लिए या ग्रुप में बाहर जा रहे हैं, उनके 20% से 2% करके आप मेरे राजस्थान का, मेरे गुजरात का, मेरे हिमाचल का, मेरे जम्मू कश्मीर का, मेरे साउथ का, केरला का वो टूरिज्म है, उसके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश ये फाइनेंस बिल में हो रही है और इसके लिए मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि इस फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने देश के उन लोगों की चिंता नहीं की है कि जिनको जरूरत थी, उन लोगों की चिंता की गई है कि जिनको रियायत की कोई जरूरत नहीं थी। गोल्ड में अगर मैच्योरिटी नहीं होती है तो कौन बीच में से कौन तोड़ता है, वो इंसान होता है जो जरूरतमंद गरीब होता है, उनकी जरूरत आन पड़ी तो वो अगर बॉन्ड तोड़ता है तो उसको फायदा इस बिल में नहीं है। इन्हीं लफ्जों के साथ इनका विरोध करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू। श्रीमान संजय सेठ। सर, मैं इस महत्वपूर्ण बिल फाइनेंस बिल 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जब एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी के क्लियर विजन से हमारी अनेक चुनौतियां, महामारी, युद्ध, ऊर्जा संकट, इन सब के बावजूद आज हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट इकोनॉमी में गिनी जाती है। महोदय,
आज पूरा विश्व आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध और महंगाई और संकट, ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। और उस समय ये फाइनेंस बिल विकास की यात्रा को गति देने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी ये कह रहे थे कि गिफ्ट सिटी की में बड़े लोगों को रियायत दी गई है। महोदय, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश के बाहर लोग जा रहे थे, क्योंकि अलग अलग विश्व में अलग अलग जगह पे कई रियायतें मिलती हैं, तो अपना सेटअप वहां बनाने जा रहे थे, सिंगापुर हो, दुबई हो, इस जगह पे। उन सबको रोकने के लिए हमने ये गिफ्ट सिटी बनाई और आज मुझे गर्व है कि उस गिफ्ट सिटी के अंदर विश्व के और हमारे देश के बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे अपना काम कर रही हैं और यहीं के लोगों को रोजगार दे रही हैं। महोदय, आज हमारा ग्लोबल जीडीपी 30.62 ट्रिलियन डॉलर का है विश्व का, और उसकी ग्रोथ केवल 2% है। चाइना की इकॉनमी 19.4 ट्रिलियन डॉलर है, उसकी ग्रोथ 4.8% है। जर्मनी, जो कि एक बहुत विकसित देश कहलाता है, उसकी ग्रोथ केवल 0.0% रह गई है। वहीं भारत की इकॉनमी 4.53 ट्रिलियन डॉलर के साथ में उसकी जीडीपी ग्रोथ 6.6 से 6.7 के बीच में चल रही है। ये दिखाता है कि हमारा भारत इस वक्त सबसे तेज इकॉनमी बन गया है पूरे विश्व में। महोदय, आज हमारे पूरे विश्व के अंदर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण तेल के दामों में $70 प्रति बैरल जो था वो अब $122 प्रति बैरल हो चुका है। ज्यादातर देशों में इस तेल के दामों को बढ़ा दिया है। नॉर्थ अमेरिकन सिटीज में 20%, सिंगापुर में 16%, दुबई में 23% और अफ्रीकन देशों में 50% तक तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन माननीय मोदी जी के पास दो रास्ते थे। एक था कि वो तेल का दाम बढ़ा देते और जनता पे ये बोझ डाल देते, और दूसरा था कि वो अपने वित्तीय संसाधनों को कम करके उनसे इस जनता को राहत दिलाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने संसाधनों से इस तेल के दाम को नहीं बढ़ने दिया, और आज इस एक्साइज की ड्यूटी कम करके जहां पेट्रोल के दामों में 10 रुपए और डीजल में नील टैक्स कर दिया गया है, जिससे देश की जनता को कोई भार नहीं सहना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से एक आम आदमी की चिंता करते हैं। ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं थी, ये उनकी दूरदर्शिता थी कि जिसमें उन्होंने ये देखा कि हम कैसे इस तेल की बचत कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने तेल के भंडारण बनाए, जिसके अंदर 60 दिन का तेल आज भी हमारे भारतवर्ष के पास है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये अपना जो ये एथेनॉल, पेट्रोल के अंदर 20% का एथेनॉल मिलाया, जिससे 4.5 मिलियन बैरल तेल बच रहा है। तीसरा, रेलवे के विद्युतीकरण के बाद डीजल की बहुत बड़ी बचत इसमें हो रही है। ये तीनों चीजों से हमारे देश के अंदर तेल की एक खपत कम हुई है, और हम इस कठिन समय को किसी तरीके से निकाल रहे हैं। महोदय, 2008 के वित्तीय संकट में जब दुनिया की टोटल कर्ज 41% से बढ़ गया था, वहां पे दूसरे देशों के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो जो था अमेरिका का 124% पर है, चीन 88% पे था और जापान 250% से अधिक भारी कर्ज में डूबा है। इसके बिल्कुल विपरीत भारत कुल कर्ज के भार के जीडीपी के 4% तक कम करने की सफलता पाई है। आज केंद्र और राज्यों को मिला के डेट टू जीडीपी अनुपात 83% है, जो दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों से
बहुत कम है। इतनी ही नहीं, सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ एक ग्लाइड पाथ तय किया है जिससे हम 2030-31 तक इस कर्ज अनुपात को 50% तक घटाकर ले जाएंगे। महोदय, 2008-9 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 7.9% था। यूपीए सरकार ने 1.34 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का जो कर्ज था उसको ऑयल कंपनीज के ऊपर डाल के अपने बुक्स को ठीक कर लिया और दिखाया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट केवल 6.1% है। परंतु मोदी जी के आने के बाद आज फिस्कल डेफिसिट 4.3% पे है और ये तब है जब हमने 1,43,000 करोड़ रुपए का ये जो ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज था वो अपनी पास से जमा किया है, मैं ब्याज के। महोदय, कोरोना के वक्त का सभी को याद है, पूरी दुनिया हिल चुकी थी। नागरिकों को हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे नागरिकों को एक तो मुफ्त वैक्सीन लगवाई और दूसरा मुफ्त राशन दिया। उस वक्त हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था वो 9.3% तक चला गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी विजन की वजह से आज ये 4.3 पे फिर वापस आ चुका है। ये एक इतनी बड़ी सफलता है जिसको कोई नकारा नहीं जा सकता। महोदय, किसी भी देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है टैक्स कलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। हमने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की छूट इस वक्त दे रखी है। इतनी छूट देने के बाद भी जब यूपीए के समय 2013-14 में कुल टैक्स कलेक्शन 6,38,000 करोड़ था, वहीं आज ये बढ़कर 25.20 लाख करोड़ हो गया है। 13-14 में मात्र 3.91 करोड़ इनकम टैक्स लोग भरते थे, आज वो 12.13 करोड़ लोग टैक्स के रिटर्न भर रहे हैं। ये दिखाता है सरकार हमारी अगर ईमानदारी से काम करे तो जनता का उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है। महोदय, इस फाइनेंस बिल में कई कदम उठाए गए हैं जिसका सीधा लाभ हमारे छात्रों, गरीबों, व्यापारियों, किसानों और एक आम जन को मिल रहा है। महोदय, हमने अभी पीछे इनकम टैक्स के कानून को खत्म किया और एक नया छोटा और सरल इनकम टैक्स एक्ट लाए हैं जिससे एक आम आदमी को जो रिटर्न भरने में तकलीफ होती थी और अलग अलग तरीके से उसके नियम को पढ़ने में तकलीफ होती थी, सीए की मदद लेनी पड़ती थी, आज वो एक ऐसा समय आ चुका है जिसके अंदर हम कोई भी एक आम आदमी और एक व्यापारी आसानी से अपने रिटर्न को भर सकता है। और इससे लाभ क्या हुआ? एक तो एक आम जनता को फायदा हुआ और दूसरा हमारे सरकार को टैक्स बहुत आसानी से अब मिल रहा है। महोदय, पहले छोटी छोटी गलतियों के लिए टैक्स डिपार्टमेंट व्यापारियों को डराता था। ऑडिट और फाइनेंशियल अब जो ऑडिट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं उस पे लगने वाली पेनल्टी को हटा दिया गया है और केवल एक छोटी फीस लेकर इसको टैक्स खत्म कर दिया जाता है। इसकी सारी पेनल्टीज खत्म कर दी जाती हैं। इससे पूरा टैक्स टेररिज्म जो दिखाया जाता था पहले वो खत्म हो चुका है। महोदय, कॉर्पोरेट टैक्स में भी बहुत सारी कमियां की गई हैं। हमने कई नियम बदलाव किए हैं। कई गलतियों में जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग बन जाती थी उनको खत्म कर दिया गया है। इससे उद्योग और व्यापार दोनों को करने में आसानी होगी और नए नए उद्योग लगेंगे। महोदय, कई छोटे करदाताओं को विदेश में, अभी विपक्ष के साथी हमारे बता रहे थे कि विदेशों में शादी करने के लिए ये टैक्स कम किया गया है। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि महोदय, छोटे छोटे करदाताओं को जो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे या इलाज के लिए जाते थे, उसके लिए ये टीसीएस की स्कीम लाई गई है। उसमें उन्होंने जो पहले 5% था अब उसको घटा के 2% कर दिया गया है। दूसरा, जो छोटे छोटे हमारे करदाता थे जिन्होंने विदेशों में अपने एक अकाउंट खोल रखा था, उसके लिए भी उनको पूरे नियम का मालूमात नहीं थी,
उसके लिए भी उन्होंने वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम निकालकर इन सबको ये बताया है कि अगर आपका कहीं इस तरह का कोई काम कर रखा है, 1 करोड़ रुपए तक की अघोषित आय या 5 करोड़ रुपए तक की कोई भी चीज है, तो उसको टैक्स की 6 महीने के अंदर उसको बता दे, तो ये एमनेस्टी स्कीम के अंदर उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। महोदय, जो ईज ऑफ डूइंग है उसमें हमने 39,000 कॉम्प्लायंसेस को खत्म कर दिया है, 42,000 को सरल कर दिया गया है और लगभग 1500 कानून बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इससे जहां हमारी रैंकिंग 2014 में 142 नंबर पे थी, आज वो घटकर 63 नंबर पे आ गई है। महोदय, इस फाइनेंस बिल के द्वारा हमने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए कस्टम ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर भी जो हमें अधिकरण में मिलने वाला मुआवजा था, वो किसानों के लिए हमने टैक्स फ्री कर दिया है। इससे ग्रामीण और सारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। महोदय, बस 2 मिनट। महोदय, एक जो सबसे बड़ा काम हमने किया है वो हमने GST 2 लाके किया है। हमने 375 जरूरी चीजों पे टैक्स को कम कर दिया है और कई ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की थी उनको टैक्स फ्री कर दिया है। इसका ये नतीजा हुआ है कि एक आम जनता की अच्छे खासी रकम बच रही है और टैक्स भी 8% से ज्यादा बढ़ चुका है। GST में जो अभी मकान को बनाने में सीमेंट में कमी की गई, ऑटोमोबाइल में टैक्स का कमी की गई, दोनों इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही हैं। महोदय, मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा है, एक आदमी हर आदमी मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, उसमें भी महोदय हमने उसके टैक्स में GST खत्म कर दिया है, जिससे एक आम आदमी और एक बुजुर्ग आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। महोदय, 2 मिनट बस कुछ है। महोदय, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए का एक बजट दिया है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 10 एक्सप्रेसवे चालू है और 12 प्रस्तावित है, और हम यूपी जो है वो 40% पूरे देश का एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ है। और हमने एयरपोर्ट, पोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस 2014 के मुकाबले पूरे देश में 3 से 4 गुना हो गए हैं। और अभी कल हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर, जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, जिससे पूरे इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ी हम लोगों को फायदा मिलेगा। महोदय, किसानों के लिए जो अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज ये तेल के संकट की वजह से फर्टिलाइजर के दाम सब जगह पे 3,000 रुपए बोरी के आसपास है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी 300 रुपए बोरी में सारे किसानों को दे रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम किसानों के लिए हो रहा है, उसको वो देखना नहीं चाहते। आज जो कम किया। और अंत में महोदय, मैं एक बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जब आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, हमारी शक्ति को पहचान रहा है, वहीं विपक्ष के साथी उसको नहीं समझना चाहते हैं। अभी जो AI समिट हुआ था, उसके अंदर जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार इनके सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है, उससे हमारी नाक पूरे विश्व में ऐसी कटी है, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान साकेत गोखले। Thank you, Mr. Vice Chairman. So we are discussing the finance bill today. So I want to start by dispelling one jumla which is being carried on since about 7-8 o'clock this morning, sir. So today the government has announced a cut in excise duties on petrol and diesel. Obviously, sir, with crude oil prices rising the way they are, with all the tension in West Asia, it was quite expected that, the prices of crude oil will go up, and they've gone up very highly, sir. Some ministers of this government since the morning, and I'm sure a lot of speakers today will also talk about how the Modi government is taking a hit to its own resources, to its own revenues, instead of increasing petrol and diesel prices. So I'll tell you why this is happening, sir. So this is happening because 4 major states are going into elections, sir. The only reason that this excise duty cut has been done today is because this government absolutely cannot
raise fuel prices when 4 major states are going into elections. So if this government really cared about the welfare of people so much and on not burdening people with prices, so for the last 4 years, sir, the government was purchasing crude oil at extremely discounted prices. Below $60 per barrel, we were purchasing discounted crude from Russia, sir. So in these 4 years, this benefit of discounted crude oil purchased from Russia, not a single rupee was passed on to the consumer at the petrol and diesel pump. So for 4 years, we were buying discounted crude oil. The government was not incurring any additional. In fact, the government was saving money, but none of these savings were passed on to the consumers. Therefore, sir, when the Honorable Finance Minister replies, I only have one request from her. Will she give a commitment on the floor of this House that after 29th of April, when the voting is completed in all 4 states, the government will promise that it will not increase the petrol and diesel prices at fuel pumps even by 1 rupee. That is the commitment that the Finance Minister should give today, that this excise duty is permanent. We are not going to raise prices after 29th of April. They should do that. The problem, sir, is that this government does not think about people. They only think about elections. You know, why is one nation, one election such a bad idea? Because regular elections make them care a little bit about people, sir. The reason they want one nation, one election is that once the elections are done, for 5 years they can keep looting the people as much as they want without any checks and balances. So the finance bill, very surprisingly, and the budget, sir, entirely failed to grasp the winds of change that have been going around the world since the last 2 years, sir. So I'll quote the Honorable Finance Minister from a budget speech. She said, "Today we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted." So clearly, sir, when she gave her budget speech, the Honorable Finance Minister was aware of global cues. But that was limited to mere rhetoric, sir, when it actually came to what was presented to Parliament. So the economic survey which came 2 days before was even more candid, sir. The economic survey said geopolitical fragmentation, commodity price volatility, and disrupted logistics are major risks to the Indian economy. Yet, sir, nothing was done by this government to hedge the economy and protect us from risks in all the financial papers that have been presented after that. So the entire budget was designed assuming that oil prices will remain at between $65 to $70 per barrel. So the situation in West Asia did not happen suddenly. Iran had been invaded earlier as well. There has been blockade by the Houthis in the Strait of Hormuz. So it's not something that was unpredictable or caught us unaware, sir. This tension in West Asia has been going on for a fair bit of time, sir. So Prime Minister Modi interestingly visited Israel 2 days before the bombing of Iran started. So now there is a question, sir. Did the Israelis inform Prime Minister Modi during his visit that after 2 days we are going to start bombing Iran? If they did not, sir, this is deceit of the highest order. Prime Minister Modi calls himself a Vishwaguru. He is visiting Israel. They did not even tell him they are planning to bomb Iran after 2 days. There is another possibility, sir, that the Israelis did inform Prime Minister Modi that, yes, Mr. Modi, in 2 days we are going to start bombing Iran. How can they will? In that case, sir, no, maybe that is, there are only 2 possibilities. So it can either be east or it can be west. So the question then is, why was the narrative after Prime Minister Modi came back about some shiny medal that was given to him in Israel and not about the impending attack on Iran? When Prime Minister Modi came back from Israel, if he was informed of the attack on Iran, why did he not start building up India's petroleum reserves? Why did he not start looking at how the LPG crisis might affect the country? Why was this country only talking about a fake medal that was given in Israel, and that was the only narrative that was going on, sir, at that point? And now suddenly after the budget, now suddenly the government's waking up. They're holding closed-door conference meetings with parties. They're not discussing in Parliament. A suo motu statement is made without any questions. And then you're saying you're going to meet chief ministers. Parliament is in session. Where is the transparency, sir? First you were caught sleeping, and now you want to discuss everything in a closed room. Sunshine is the best disinfectant. Come to Parliament and discuss the West Asia crisis. Sir, some facts, some hard facts, sir. This is beyond politics, sir. India roughly imports about 88 to 90% of our crude oil requirement. So with the current rise in oil prices, sir, India's import bill is going to rise by 4 to 6 lakh crore rupees, sir. Fiscal deficit, the honorable member before me was talking about. This one data point, sir, you can imagine what difference it is going to have in India's fiscal deficit, sir. So coming to LPG, you know what is interesting, sir? The LPG subsidy allocation in this budget, in this year's budget, sir, has been cut by 27% from last year. Cut down by 27%.
So interestingly, last year, when LPG subsidy budget allocation was done, the revised estimate, sir, was 66% higher than the budget estimate, which means this is way before any war started. Even at that point, the government realized, no, we have to spend more on LPG subsidies because that is a problem that the poor and the vulnerable are facing. 66% increase from budget estimate to revised estimate. And now with all the tension happening in West Asia, this year they've decided to cut the LPG allocation by 27%, the subsidy, sir. So the government has budgeted no money to help the poor and middle classes of this country when it comes to LPG. In fact, LPG cylinder prices were hiked by 60 rupees overnight. Today they're talking excise card. We want to protect the people. Pradhan Mantri Modi is going to break his fixed deposit and pay all this money from his pocket. Why were LPG prices increased by 60 rupees, sir? Why was the burden put on the consumer? Why couldn't the government absorb that? Problem is, sir, elections are coming. They don't have an option today but to absorb it. 29th April onwards, fuel prices are going to go up at the pumps. So the total fuel and petroleum subsidy in a country like India, sir, amounts to 2.6% of the total subsidy bill, sir. Of our entire subsidy bill in a country that imports 88% of crude, only 2.6% is allocated in the total subsidy for fuel and petroleum. Oil prices are historically high. Rupee has gone below 93. Our import bill is going up. Oil is more expensive. But the government is saying, आप आत्मनिर्भर बनो. LPG नहीं है, आप चूल्हा पे खाना बनाओ, आप आत्मनिर्भर बनो. Sir, petroleum reserves we were talking about. So this year the government slashed the strategic petroleum reserve allocation by 97%, sir. 97%. Even last year, sir, what was the total allocation for strategic petroleum reserve last year? The allocation was 6,000 crore. How much did we spend, sir? We spent only 1,000 crores. So only 70% of the budgeted amount was spent on strategic petroleum reserves last year, sir. Because of that, what is the state of the strategic petroleum reserve today? Let's be very clear about it. These are numbers. So currently we have 5.33 million metric tons across 3 facilities. 3 facilities in India, 5.33 lakh metric tons, sir. So these 3 sites are not at 100% capacity. They're only filled up to 64% of the total storage capacity. So this means that the government by itself, excluding the government itself, has only 9 days of crude oil supply left in its reserves, sir. 9 days of crude oil supply is all we have. So if we count the commercial storage of OMCs, we only have 74 days of storage capacity left with us. 74. Let's compare that with other oil importing countries, sir. Japan, 254 days of reserves. South Korea, 208 days of reserves. China, 200 days of strategic oil reserves. India, only 74 days of reserves, sir. So when the finance minister was replying in the Lok Sabha on the finance bill, obviously elections are coming. Everyone wants to show they care about Bengal after not caring about it for 5 years. Suddenly there's a renewed interest. But I have to appreciate something, sir. As a fellow student of Bangla, I appreciate that the finance minister tried to speak one sentence in Bangla during her speech. While it was to attack us, that's a different story altogether, but she attempted, sir. So I'm also someone who's been learning Bangla, sir. I haven't had a chance to speak in Bangla here for the last 2.5 years because I've also been practicing learning. But I'm delighted that the Honorable Finance Minister now is also a fellow learner of Bangla like me. The difference, sir, is she unfortunately and her party will never get a chance to represent Bengal here. Our party does, but that's a different story. So as a part of my learning of Bangla that has happened, sir, there is a few lines I wish to share with the Honorable Finance Minister which will enrich both of our knowledge, sir. So the first one, Banglar Manushe, and I apologize for my pronunciation, I'm a learner. The Finance Minister might be learning faster than I am. Banglar Manushe, Nyajo Prapto, 2 lakh koti takaro, beshi ortho atke rakhe, tader bonchito koreche kendriyo sarkar. Translation, sir? The union government has deprived the people of West Bengal by withholding over rupees 2 lakh crores of our legitimate dues. Second, sir, Ashonna Nirbachane, BJP har nishchit. Eta bushte perei, Kendriyo Sarkar, Bangla ek prokar, Oghoshito Joruri Obostha Jari Koreche. The union government has imposed an undeclared emergency in West Bengal because the BJP knows they're losing the upcoming state elections. So third, Kendriyo Sarkar, Deshe, Jwalani o LPGir, Shankot, Aral Korar, Cheshta Korche. The union government is hiding the fuel and LPG crisis that is engulfing the entire country.
And the fourth one, sir, very important. It's my favorite one, sir. Agami Chauta Mai, Mamta Bandyopadhyay, Chaturtho Barer Jonno, Banglar Mukho Mantri Hoben. On the 4th of May, sir, Mamta Banerjee, whether they like it or hate it, doesn't matter, will become the Chief Minister of Bengal for a historic 4th term. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bangla. You take remaining, no problem. The speaker did not speak for 19 minutes. There's a small mistake in the timing that may be corrected. Thank you, sir. Okay. Thank you. Right. Sriman P. Wilson. Thank you, Vice Chairman, sir. I'm happy to see you in this seat today. This government came to power promising Sabka Saath, Sabka Vikas. What we have today, a regime of Sabka Boj, Sirf Unka Vikas, which means burden on the many, the benefits for the chosen few. This government functioning with slogans and budget is equally full of slogans. Let me demonstrate with unemployment, which is styled as Yuva Shakti-driven budget. India today is facing an unemployment crisis. What is more shocking is that 83% of our unemployed population is youth, according to the Indian Employment Report 2024, jointly published by the International Labour Organization and Institute of Human Development. A 2026 report titled State of Working India finds that graduate unemployment among the age group up to 29 years remained high, nearly 40%. Vice Chairman, sir, that means 4 out of every 10 educated young Indians are jobless. And what does this finance bill offer them? Slogans like Yuva Shakti. But slogans do not create jobs. There is no national employment guarantee for the urban youth, no enforceable job creation framework, no meaningful protection for the gig workers and the unorganized sector, which employs over 90% of the India's workforce, no universal social security. Vice Chairman, sir, inequality in India, that is, I'm meaning inequality in India, has reached unacceptable levels. According to the World Inequality Report 2026, the top 10% capture 58% of the national income and hold 65% of the total wealth. Meanwhile, the bottom 50%, over 70 crore Indians, are left with just 15% of the income and a mere 6% of wealth. Only yesterday I saw a post on the social media that one industrialist, Ambani, wealth increased to 500% since 2014 and Adani wealth over 1000%. But India fell from 52nd position to the 102 position in the global hunger strike. Sir, I am not against Indian businesses and large corporations doing well. In fact, economic growth is driven by growth of Indian industry. But the question is income inequality and the government's apathy towards the middle and lower economic class of the society. So what does this finance bill do to address income inequality and help those in dire need? Nothing. Does it tax the super rich? Does it introduce a wealth tax, an inheritance tax? Does it even attempt redistribution? No. Instead, it hands out concessions to corporations, minimum alternate tax reduced to 14%, SEZ tax holidays extended to 20 years, safe harbor margins for data centers fixed at 15%, and massive incentives for the capital-intensive sectors like semiconductors, rare earths, and electronics sectors dominated by a handful of corporate giants. In fact, welfare expenditure has been slashed by 59,456 crores compared to the last year. The gender budget alone have been cut by 51,144 rupees crore. Schemes that sustain the poor, Manrega, PMAY, PMJAY, PM Poshan, crop insurance are being short-changed. Sir, the only welfare economics that comes to the mind of the union government is direct cash transfer
in BJP-headed and electoral alliance parties rule states heading for elections. That also only before election. After election, there is no thought of achieving a universal basic income. Fertilizer subsidies are down, food subsidies are reduced, fuel subsidies is shrinking. You are taking away the lifeline of the poor to fatten the balance sheets of billionaires. What steps are taken for addressing LPG scarcity? India is today one of the largest consumers of LPG in the world, with annual consumption of approximately 31 million tons. But our national storage capacity barely covers 3 to 4 weeks of consumption, and strategic reserves are extremely limited. Nearly 60 to 67% of LPG is imported, mostly from West Asia through the Strait of Hormuz, making India highly vulnerable to geopolitical disruption. This is largely because the government has failed to diversify energy sources efficiently. The government has also been slow in building the necessary natural gas infrastructure, such as the pipelines and terminals, which has hindered the goal of a gas-based economy. For example, the Kochi LNG terminal has been underutilized for years. Recently, the government has also announced that those with PNG access but has not availed, it will be cut off from LPG. Sir, this is highly draconian. There may be many reasons, including high cost and technical feasibility, for not switching over. We must encourage and allow this transition gently and over a period of time, not forced and immediate. Is there any provision in the budget to address this West Asia global tensions? No. For middle class, there is no structural tax relief. There is no encouragement for their savings or frank disclosure of income. Instead, what we see is a dangerous expansion of powers. Tax authorities can now reopen past assessment without any limitations, even in a closed cases. This is a tax terrorism with legal backing. Sir, in my speech on the budget proposal, I highlighted how there is no relief for the relentless red tape in the tax administration. Nothing has been done in this bill to provide relief from that. Sir, still there is no legal guarantee of MSP for farmers, no comprehensive agriculture reform addressing debt, climate risk or price instability. Farmers continue to suffer, suicides continue, and the government looks away. Sir, I want to take this opportunity to highlight a growing trend of monopolies in key sectors like defense, energy, ports and airports. This is against the national interest. I want to say that in last few years, the government of India has issued a directive to all coal-based thermal plants to procure coal on pass-through basis in separation of the terms of the power purchase agreement. This has been skyrocketing of price of electricity purchased by the DISCOMs, which is ultimately passed on to the consumers. I hope the government takes a complete audit of the financial distress caused by these pass-through directions under Section 11 of the Electricity Acts and comes up with a plan to counter high cost of imported coal in the future without issuing ad hoc directions like this. The government claims fiscal prudence with a 4.3% fiscal deficit target, but this cannot be achieved by cutting welfare, squeezing subsidies, and shifting the burden into poor. Meanwhile, India's debt to GDP stands at 55.6%, and the interest payments consume nearly 20% of the total expenditure. Gross tax revenue growth is a modest of 8%. GST collections are stagnating. Consumption demand is weakening. Even UPI growth is slowing. Clear signals of an economy losing momentum. We see tax holidays for IFSC units extended to 20 years, duty exemptions for critical minerals, incentives for data centers, and an infrastructure risk guarantee fund, a mechanism where profits are privatized and risks are socialized. This is a crony capitalism at its worst. Chairman, sir, the government may speak of 3.2% of inflation, but I request the Honorable Finance Minister to step outside the House and see the real India. An engineering graduate drives a cab. A farmer borrows for seeds. A small business shut down quietly. A family cut proteins from its diet. Graduates are jobless. Growth is being announced, but where is the result? You promised 2 crores job will be created every year. It has been 12 years. Where are the 24 crores job created? You promised doubling farmers' income. Where is that income? Ask any family about actual food prices, fuel costs, school fees, cost of transport.
they are struggling to make ends. The real inflation in the hands of the people of this country is around 10 to 15%. Now let's come to the tax burden. Direct taxes grow by 11.4%, indirect taxes grow by 3%. Indirect taxes are paid by the common people when they buy soap, buy groceries, buy clothes, recharge mobile, buy school notebooks and all other essential commodities. Dr. B.R. Ambedkar spoke, indirect taxation falls upon the poor man whether he can afford it or not. A billionaire pays GST, a construction worker pays GST. Same tax, same rate, but the pain is different. The rich feel taxation in spreadsheets. The poor feel taxation in groceries. A middle-class mother does not track fiscal deficit. She tracks the price of the rice and the onion. This budget shows that the union government has failed to fix a tax system that hits the poor the hardest. Tax collections are growing very slowly, but there is still no clear plan to stop tax evasion or bring more people into the tax net. Sir, I also want to highlight the paltry sum allotted to the Ministry of Law and Justice. Sir, we stand at the precipice of the AI revolution in the legal profession. At this stage, we should be talking about the modernizing court and providing access to cutting-edge technologies to judges to ease their burden and improve decision making. But the stark reality is that across India, district judiciary and in some states, even high courts are struggling with the basic infrastructure like computer, toilets, etc. I have visited many high courts across the country and even the district courts, but their infrastructure is very poor. Sir, allocating funds to the judiciary will also contribute to the growth of economy. When commercial cases are assured of a speedy disposal, the confidence in the Indian industry is boosted. When long-standing property disputes are decided, the assets can be utilized for monetization. Therefore, I urge the Honourable Finance Minister to address the needs of judiciary, particularly on the infrastructure. Similarly, I have been speaking many times on the need to increase the salaries of the judges of the Supreme Court and High Court. The salaries that are being paid now doesn't commensurate with the work they do. We need to give our judges financial security. Retirement of ages of the judges of Supreme Court should be increased to 70 years, and the retirement pension of the judges of the High Court and Supreme Court should be equal to their salary last drawn, and the retiring judges should be used only for their government works and ban their employment in tribunals. Sir, income of middle-class people are stagnating. Savings are shrinking, aspirations are collapsing, and yet we are told this is a success story. But under the government, the rich becomes richer. Sir, this very government has the audacity to lecture states on the fiscal discipline while its own fiscal house is in complete disorder. The number exposes the truth. The union debt to GDP ratio stands at a staggering 55.6%, more than double that of Tamil Nadu discipline, 26.12%, and yet it is the centre that claims to be the guardian of prudence. Let us look deeper into this so-called fiscal management. Of every rupee the union government earns, nearly 38% is swallowed by interest payments alone. That is, rupees 14.04 lakh crore is paid as interest, an astronomical sum that vanishes before a single rupee is spent on the development, healthcare, education or job creation. To my parliamentary question, sir, the ministry has revealed that the outstanding debt of the union government has grown sharply in the recent years. The total debt stood as 156.13 lakh crore in 2022-2023. It increased to 171.70 lakh crore in 23-24. It further rose up to 185.95 lakh crore in 24-25 and estimated to reach 200.53 lakh crore in 25-26 with a budget estimate of 218.63 lakh crore in 26-27. This means in just 4 years, the union government's debt has expanded by 62 lakh crore, representing an income of around 40% since 22-23. While the union government repeatedly lectures states on the fiscal prudence and financial discipline, its own debt trajectory shows a steep continuous rise, raising serious questions about the sustainability of central fiscal management. The reply also exposes a deeply
troubling imbalance in India's fiscal federal structure, particularly in the treatment of Tamil Nadu. The union government collected 1,75,088 crores from Tamil Nadu in the year 2022 to 23 and rupees 2,07,314 crore in 2023 and 24 and rupees 2,17,165 crores in 2024 and 25, totaling to 5,99,567 crores in tax returns from the state of Tamil Nadu over last 3 years. However, sir, the funds devolved to Tamil Nadu from the share of the central taxes during the same period were 38,731 crores in 2022 to 23, rupees 46,072 crores in 23-24, and 52,492 crores in 2024 to 2025, totaling to 1,37,295 crores. For example, for every 1 rupee of tax revenue collected by the union government from Tamil Nadu, the state receives only about 23 paise in its capital of the central divisible pool of taxes. This is nothing short of fiscal injustice. A comparison with other states reveals the magnitude of this imbalance. For example, the Uttar Pradesh contributes 3,62,457 crores in taxes to the union government over the same 3-year period. Yet the funds devolved to UP from the central taxes amount to 6,03,220 crores. This means for every 1 rupee of tax revenue collected by the union government from the Uttar Pradesh, it receives about 1 rupee 66 paise back from the shares of central taxes. This disparity becomes even more striking in the case of Bihar. The taxes collected from the Bihar during 3 years total to 49,215 crores, while the funds devolved to the state from the central taxes amount to 3,38,549 crores. In effect, for every 1 rupee of tax collected by the union government from Bihar, the Bihar receives 6 rupees 9 paise back from the 90 paise back from the share of the central taxes. Tamil Nadu, one of the India's strongest economic contributors and the major generator of the national tax revenues, receives only a fraction of what it contributes. Meanwhile, several states that contribute far less significantly larger transfers. The people of Tamil Nadu deserve a fair and equitable shares of the resources they help generate. If the principle of cooperative federalism is to have any real meaning, the union government must address this glaring disparity and ensure that the distribution of the national resources do not systematically disadvantage high-performing states like Tamil Nadu or penalize them for the same. Sir, if the union government truly believes in cooperative federalism, it must answer a simple question. Why is Tamil Nadu paying 1 rupee and getting 23 paisa from the central divisible pool of shares? At the same time, other states receive 1.66 or even 6 rupees 90 paisa for every rupee contributed. Tamil Nadu has demonstrated that fiscal discipline is nothing about the cutting welfare. It is about managing resources intelligently and prioritizing the people. But what does the centre do? It withholds our rightful funds, cut devolution, delays dues, and then turns around to preach fiscal morality. All this while own debt continues to balloon in its interest burden, tightens like a noose around its budget. Several crucial central schemes funds owed to Tamil Nadu remain pending. According to the detailed representation made by the Tamil Nadu government, the union government owes more than 10,000 crores across various schemes. Take Jal Jeevan Mission. The union government has released only 5,914 crores, leaving 3,100 crores still pending. Madam, whenever you deny our lawful dues and give pinpricks through governor, one slogan our MK Stalin always say to our people of Tamil Nadu, Tamil Nadu Poradum, Tamil Nadu Vellum. Several funds remains only on paper. For example, Urban Scheme Fund announced in budget. But till today, we have not received anything. You may control the narrative today. You may withhold our lawful funds amounting to more than 10,000 crore, twist data and preach fiscal sermons from Delhi. But there is one force you cannot control, the people. The people of Tamil Nadu are watching. Madam, you have given nothing to Tamil Nadu for the last 5 years and made them struggle. Mark my words, the people of Tamil Nadu will reciprocate in the same way you did on 23rd April, and you will know the results on 4th May, when the people of Tamil Nadu deliver their judgment against you. The people of Tamil Nadu knows only one slogan, Madam, Stalin Todaratum, Stalin Vellatum. Thank you, Vice Chairman, sir.
Sri Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, बजट सत्र तकरीबन 2 महीने का होता है और इस बजट सत्र की सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम होती है एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से सरकार 53 लाख करोड़ खर्च करने का अधिकार लेती है और फाइनेंस बिल के माध्यम से सरकार 140 करोड़ भारतीयों पर कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार लेती है। लेकिन सर, इन दोनों बिलों पे चर्चा के लिए सिर्फ 11 घंटे दिए गए सर, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो 5% बजट कंज्यूम करता है उस पर सर 3 दिन चर्चा हुई। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, बाकी मंत्रालयों पर भी होनी चाहिए। ये 102 मंत्रालयों में से एक था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, इस पर सर चर्चा इतनी कम क्यों हम इसको एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बना रहे हैं सर, मेरे सत्ता पक्ष के विद्वान बार बार बात कहते हैं, सदन में भी सदन से बाहर भी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात, हम सब चाहते हैं ऐसा ही हो, लेकिन सर मेरा पेट तो आज खाली है सर, और सरकार कहती है कि 2047 में आपको दावत देंगे, आपको पार्टी देंगे। मतलब आप 20 वर्ष भूखे रहिए, 2047 के इंतजार में क्या उसका आप दावत मिलेगी? सर मुझे ये दावत नहीं चाहिए, मेरा पेट आज भरो, ये मेरी नहीं 140 करोड़ भारतीयों की मांग है कि मेरा पेट आज भरो, 2047 में नहीं। सर मेरे भारतीय बोलते हैं विकसित भारत का सपना बहुत शानदार लगता है, विकसित भारत का सपना बहुत शानदार लगता है, लेकिन बजट देखकर आम आदमी क्यों लाचार लगता है, सर अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूंगा। पिछले वर्ष भारत सरकार ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कर दी और नौकरी पेशा की 12,75 की। सर मेरा भी एक स्टाफ मेंबर था, उसकी 12,75,000 सैलरी थी। इस बार अच्छा काम किया मैंने, उसकी इंक्रीमेंट 50,000 लगा दी, मतलब 13,25,000 हो गई। वो सर मेरे पास आया, बोलता कहते सर आप मुझसे नाराज हो? मैं क्या भाई क्या हो गया? तो आपने तो सैलरी बढ़ा के मेरा नुकसान कर दिया। जब मेरी 12,75,000 सैलरी थी, मेरा 0 इनकम टैक्स था, अब 13,25,000 सैलरी है, मेरा 1 लाख का इनकम टैक्स हो गया, मतलब मेरी नेट इनकम कम होगी, 12,25,000 आएगी। सर 12,75,000 से 12,25,000 आएगी। सर वो तो बेचारा रो रहा था कि तरक्की का तोहफा मिला, पर अजीब हिसाब, वेतन बड़ा कागज पर, हाथ में कम हो गया जनाब, कम हो गया जनाब। सर यह तो ग्रोथ पर पेनल्टी होगी सर, ये कौन सा टैक्स सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आता सर। सर हमारे नौकरी पेशा भाई वो तो सर वो दूध देने वाली गायें बन गए हैं कि चारा तो उसको कोई देता नहीं है, लेकिन सरकार बाल्टी लेके खड़ी है कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। सर वो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, वो कहते कुछ है होता कुछ है। सर ऐसे ही इस स्कीम में था सर ये। सर मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के। सर मान लीजिएगा एक व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ रुपए है, तो सर सबसे पहले क्या होता है, वो 32 लाख रुपए का इनकम टैक्स देता, मतलब बचे उसके पास 68 लाख। उसके बाद वो लोगता है चलो मैं एक एसयूवी खरीद लूँ 20 लाख रुपए की, वहां जाता है तो उस पर 10 लाख का टैक्स और सेस पड़ जाता है। उसके बाद 3 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, ये सब कुछ लग जाता है। फिर वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करता है, टोल टैक्स देता है, पार्किंग का खर्चा देता है, मेंटेनेंस, कार की मेंटेनेंस पे जीएसटी देता है, मतलब 2-3 लाख रुपए और, टोटल 15-16 लाख। फिर सोचता है चलो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं एक घर बना लूँ, 1 करोड़ का जमीन खरीदता है, उस पर 10 लाख रुपए वो रजिस्ट्रेशन फीस देता है। फिर कंस्ट्रक्शन करता है, उस कंस्ट्रक्शन पे मान लो 1 साल में उसने 20 लाख की कंस्ट्रक्शन की तो 18% जीएसटी देता है, मतलब 4 लाख रुपए और। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है,
फिर जो पैसा बचता है वो खाना पीना, कपड़े, ट्रैवल, दवाइयाँ, ये सारा कुछ करता है। सर जब आप ये जोड़ेंगे ना तो टोटल टैक्स बनेगा 65 से 66 लाख रुपए। सर कैलकुलेट करके देखिए, मतलब 35 लाख रुपए का उपभोग करने के लिए वो 65 लाख रुपए का टैक्स देता सर। यानी कि इफेक्टिव टैक्सेशन 200%, 200% इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट आता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स को मिला के। ये हमारी हालत है सर। सर सरकार कई बार कहती है कि बाहर भी इनकम टैक्स ज्यादा है, जीएसटी तो विदेशों में आमतौर पे 4-5% ही है सर, लेकिन वहां बच्चों को स्कूल, हायर एजुकेशन फ्री है सर। जर्मन की बात करें, कहीं की करें, फ्री हेल्थ केयर है, फ्री सोशल सिक्योरिटी गारंटी है, अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन है। और सर भारत में प्राइवेट स्कूलों की फीस देनी है, एक्सपेंसिव मेडिकल लेना है, बिजली पूरी मिलती नहीं उसके लिए जनरेटर रखना है, सरकार सिक्योरिटी दे नहीं पाती, प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी है, और सर पानी पीने के लिए भी आरओ वाटर लेना पड़ता है सर, क्योंकि पानी भी हमारे नलकों से साफ नहीं आता। सर एक नई विसंगति अभी सुनने में आया कि सरकार ने 10 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पर कुछ टैक्स कम कर दिया। बड़ी खुशी हुई, सब जगह लोग खुश थे, चलो पहली बार कुछ अच्छा स्टेप आया सरकार की तरफ से। लेकिन सर जब उसकी फाइनल आउटकम आई कि वो तो कुछ जो पेट्रोल कंपनियां उनको सरकार कुछ देगी, पब्लिक का तो रेट कम नहीं हुआ सर पेट्रोल डीजल का, वो तो वहीं का वहीं है। सर ये कैसी छूट है? वो सेम सर इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये चीज यहां पर लागू होती है सर। अब सर मैं जीएसटी की कुछ बात करना चाहूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स की। सर जब जीएसटी आया पूरे जोर शोर से आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारे देश में आगे बढ़ना है, पर सर ग्राउंड रियलिटी तो डिफरेंट निकली। ये तो सर ईज ऑफ डूइंग हरासमेंट, ईज ऑफ डूइंग टैक्स टेररिज्म बन गया सर। सर 2024-25 में 40,000 एमएसएमई बंद हो गए, 10,000 स्टार्टअप बंद हो गए सर। सर पहले टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है, फिर एक दुकानदार के पास इनकम जीएसटी का रेड किया जाता है, और सर उनको अरेस्ट की पावर है। क्रिमिनल केस बनाना अलग बात है, अब इमीडिएट अरेस्ट की पावर है, जैसे उसने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया। और सर अरेस्ट करके वो धमकियां देते रहते हैं। सर बिजनेसमैन यदि जेल चला जाएगा तो बिजनेस कौन करेगा? देश के लोगों को, युवाओं को नौकरी कौन देगा सर? सर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था इनकम टैक्स में, जो कि अप्रिशिएबल, हम अच्छा काम है तो तारीफ करेंगे, फेसलेस असेसमेंट, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। करप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कम हुई है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सर ये जीएसटी भी उल्टा क्यों? ये भी इसी सरकार के टाइम बना है, इस पे आप छोटी छोटी गलतियों पर अरेस्ट कर रहे हैं, यहां भी ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं कर रहे? सर पहले वैट होता था या सेल टैक्स होता था, सर्विस टैक्स तो भारत सरकार खुद ही लगाया करती थी, उसमें तो ऐसा अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं था। भारत सरकार कुछ अच्छे कदम ले रही है कि सैकड़ों कानूनों में डीक्रिमिनलाइज किया है, जो क्रिमिनल प्रोविजंस निकाले हैं भारत सरकार ने, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। पर ये जीएसटी में सारा अन्याय क्यों? इनकम टैक्स फेसलेस कर दिया, बाकी आपने किया, लेकिन जीएसटी में तो सीधे अरेस्ट की पावर दे दी सर। और सर मतलब ये हो गया, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि ये तो सर करप्शन की दुकान खुल गई है सर, करप्शन की दुकान खुल चुकी है जीएसटी के नाम पर, अरेस्ट के प्रोविजंस के नाम पे सर। सर अब मैं एप्रोप्रिएशन बिल की बात करना चाहूंगा। सर जैसे कि एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 26-27 में 53 लाख करोड़ खर्च करने का अधिकार सरकार को मिला है या मिल जाएगा सर, पर यह पैसा सरकार का नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा सर, आपने टैक्स पेयर से इकट्ठा किया है। सर अगर किसी को कोई किताब लिखनी हो ना सर,
हाउ टू वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी, हाउ टू वेस्ट टैक्स पेयर मनी, वो भारत के एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से लिखी जा सकती है सर, जो कि गलत है। सर, भारत सरकार अपनी सेल्फ प्रमोशन पे 1000 से 1500 करोड़ खर्च करती है सर। बीएसएनएल को पिछले 6-7 वर्षों में भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया सर, 3 लाख करोड़। ये पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक का ही है सर। सर, स्मार्ट सिटी योजना 48,000 करोड़ का पैसा खर्च हुआ अभी तक। सर, कौन सा सिटी स्मार्ट होगा? भारत सरकार एक भी सिटी का नाम दे दे सर, हमें तो नहीं दिखता, कम से कम हम उसको विजिट करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना सर, या तो डिले हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रही है, वो भी लोगों को घर नहीं मिल रहे सर। सर, सबसे महत्वपूर्ण सर, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद मुंबई में बुलेट ट्रेन चलने की बात थी और 2023 की उसकी डेडलाइन थी। अब कब डेडलाइन है मालूम नहीं, शायद कहते हैं 2028 की है। सर, कॉस्ट थी 1,08,000 करोड़, अब कॉस्ट शायद 1,60,000 करोड़ तक पहुंच गई है सर। सर, ये टैक्स पेयर का पैसा सर। सर, कैग की एक रिपोर्ट थी 2018-19 से 22-23 के में कि कुछ उन्होंने रिजर्व फंड कैटेगरी बनाई कि रिजर्व फंड आएंगे और यहाँ लगेंगे, और हमारे भारतीय सरकार की बात सुनते हैं और उसमें 2,41,000 करोड़ रुपया आ गया। लेकिन जो फंड थे, जो डेजिग्नेटेड फंड थे, उसमें सर कितना गया? 344 करोड़ रुपया, सिर्फ 344, 1% भी नहीं, 0.14%। सर, ये कैसा हमारा सिस्टम है सर? सर, एक और बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है जो मैं बात करना चाहूंगा सर। जैसा हम देखते हैं ना, जब दिवाली आती है, दिवाली सेल लगती है, न्यू ईयर में न्यू ईयर सेल लगती है, क्रिसमस सेल लगती है, कुछ बम्पर सेल लगती हैं, ऐसे ये जो महीना मार्च का चल रहा है सर, यहां पर भी ना सरकार में मार्च क्लियरेंस सेल लगती है सर। मार्च क्लियरेंस सेल, जो सरकार का फंड बचा होता है, पूरे 11 महीने काम नहीं करना महकमों ने, और मार्च में कहते हैं जी फटाफट टेंडर जारी करो, परचेज करो, पैसा खर्च करो, इधर करो उधर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रिकरिंग हो, बस पैसा खत्म करना है, खपाना है। फिर सामान आ जाता है गलत ठीक, महंगा आता है, पड़ा रहता है, कोई उपयोग नहीं आता। सर, ये टैक्स पेयर की मनी है सर। इस पर सरकार ऐसे आंखें बंद कर लेती है, हर साल हो रहा है सर, ये हर साल हो रहा है, ऐसे आंखें बंद कर लेती है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता सर। सर, ना वेस्ट करें सर सरकारी टैक्स पेयर का पैसा सर। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सोशल इक्वालिटी की बात कही गई, जो कि हम सभी मानते हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है सर। टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है और 50% नीचे के लोगों के पास सिर्फ 15% वेल्थ है सर। जॉब तो आने रही, 2 करोड़ जॉब्स की बात हुई थी, वो तो आने रही। इनफॉर्मल सेक्टर, गिग वर्कर जिसको हम कहते हैं, वहां उनको जॉब्स मिल रही है। ना जॉब सिक्योरिटी होती है, ना उसमें सोशल सिक्योरिटी होती है, ना कुछ और होता है सर। सर, इन लोगों को काम करने के प्रति क्या मनोबल रहेगा सर? हमारे पुराने अर्थशास्त्री चाणक्य साहब जी थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी सर कि कर ऐसे लो जैसे मधुमक्खी फूल से रस चूसती है, फूल को नुकसान पहुंचाए बिना। पर सर, हम आटे में नमक तो चलता है, चलना भी चाहिए, पर सर यहाँ तो नमक में आटा होगा, जैसे कि मैंने बताया 2/3 बनी तो पहले टैक्स में चली जाती है सर। हम सभी भारतीय भारत को विकसित करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन सर हम चाहेंगे सरकार हमारी बात सुने, और इसलिए मेरे सरकार के 4 मैं निवेदन करूंगा सर। सबसे पहले तो सारे टैक्स सिस्टम को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कस्टम जो भी हैं, उस सिस्टम को रैशनलाइज किया जाए सर। दूसरा, 12 लाख वाली अनोमली को इमीडिएटली ठीक किया जाए सर। सर, जीएसटी में जो अरेस्ट और हरासमेंट चल रही है उसको खत्म किया जाए, और पब्लिक मनी का सर सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए सर। सर, इसके साथ मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में हमारे रूरल डेवलपमेंट का तकरीबन 5 लाख
5,000 करोड़ रुपया पड़ा वो नहीं दिया गया, हमारा जीएसटी का हिस्सा पड़ा वो नहीं दिया गया, फ्लड्स आई थी उसमें सरकार ने कमिट किया था, कम किया था, चलो जो भी किया था 1,200 करोड़ के करीब, वो भी अभी तक सर नहीं दिया गया। वो सर प्रोविजन किया जाए इस एप्रोप्रिएशन बिल में, पंजाब को वो पैसा वापस करें। और सर आखिर में 2 लाइनें, सिर्फ नारों से नहीं सही नीति से देश आबाद होगा, कागजी महलों से नहीं, पक्की बुनियाद से नया भारत जिंदाबाद होगा, पक्की बुनियाद से नया भारत जिंदाबाद होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी। माननीय श्री एस निरंजन रेड्डी जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I wonder how much has changed from 1st February when the finance bill was first presented. This should be any budget maker's nightmare, sir. Crude and Brent prices have gone up, fertilizer prices have gone up, there is a shortage. So inflation is likely to go up, the dollar prices have increased. So, sir, from the time the finance bill was presented on 1st February, there is a sea change. Sir, the only piece of advice I have for the finance ministry is please try to control the controllables. Sir, while I wish them the best in trying to do this firefighting, we cannot lose sight of certain long-term objectives that the finance bill normally attends to, sir. Sir, even in my last finance bill speech last year, I had focused on defense budget and the defense allocation. Sir, I am going back to that particular topic of defense allocation. Sir, defense allocation in the finance bill and the allocation, the appropriation, sir, provides for the largest budget head. Sir, it provides for 7,84,000 crores, which corresponds to 14.7% of the central expenditure. So this is the largest budget head. Sir, but I was hearing Mr. Wilson, the honorable member, speak that the interest burden we bear is 28%, twice of our defense budget. Sir, defense budget has been increasing in terms of absolute numbers. Sir, but you might be surprised to note that structurally, sir, the defense budget is still less than 2% of the GDP. Sir, just for us to understand, in 1985, India was spending 3.6% of its GDP on budget on defense. 1990 it came down to 3.1%. In 2000 it came down to 2.9%. It remained steady at 2.9% till 2005. In 2024 it came down to 1.6%. I can understand, sir, why this came down over a period of time. I agree when the Honorable Prime Minister said that the era of war is over, when he made that statement. Sir, I think now the era of peace is over. Let us acknowledge it. With the global strife and conflicts that are happening, we cannot anymore think that the era of war is over. We need to be prepared on the defense side. Sir, when you look at the world examples, Poland today spends 4.48% of GDP on defense when it is confronted with the crisis of Russia on one border. Entire NATO, sir, has pledged that they must increase their defense spending to 5%. Sir, India is very, very uniquely placed where we have threats on two sides of our borders, so the budget of 2% of GDP is woefully inadequate. Sir, even amongst the 2% that is out of the GDP that is set apart for defense budget, 22% of this 2% goes for pensions. Another 22% goes for salaries, and with the 8th pay commission recommendations likely to come, that is going to increase. So out of the 2% of the GDP that is allocated for defense, sir, the capital expenditure is just 17%, and R&D is 3.7%. We need to increase the defense allocation, sir, for our defense forces. We need to have more acquisitions. We need to have more hardware. We need to replenish very fast. Sir, I recognize that we have many challenges. The finance minister will be constrained because she will have immediate demands today
where there is going to be an import crude price bill that will increase tremendously. There will be a fertilizer bill that will increase. We may see some supplementary demands for grants that may come. Now, amidst all this, she would still have to find a way for increasing defense allocations, sir, because in the last 4 years that I have been a member of parliament, I have not seen 1 year when there has not been a demand that was compelling for that particular year. Each year, the government will have some compelling interest, some developments. If we keep pushing the defense allocations for a future date, that future date will never come. Sir, I have one recommendation. I have heard several states complain of the cesses that are being collected from the budget, which is not a part of the pool, divisible pool for the states that are entitled to get a share. Sir, my recommendation for the defense minister, for the honorable finance minister is, please scrap all cesses that you are collecting towards various charges. Have one defense cess. I don't think any state will really grudge if the defense cess money that is collected is used only for capital expenditure, which will steal up our armed forces, so long as it is reasonable. Sir, my personal recommendation to the government and to the honorable finance minister is, please do something out of the box for ensuring that the defense budget and the defense allocation goes up. Sir, another area that I wanted to speak about, and I have touched upon this earlier, is the Ministry of Law and Justice allocation. Sir, when I have to explain why I am speaking this in the context of finance bill, sir, it has been reported that if we improve our judicial infrastructure and the justice delivery mechanism, it will add 1% to 1.5% of the country's GDP just through these judicial efficiency delivery mechanisms. So there are several capacity constraints. Sir, in the last finance bill, this House had discussed and the Lok Sabha had approved an increase in capacity for premier institutions like NCLT and NCLAT. Sir, I practice in NCLAT when I am not here. The increased strength has really not materialized. The infrastructure support for the judicial members is woefully inadequate. So there are 5 crore pending cases. There is a huge pendency and the contractual enforcement has become a large problem in India. Sir, in Supreme Court, at the time when the average filing per year had gone up to 40,000 cases per year, it was resolved that the strength of the Supreme Court judges would be increased to 36. At a recent Supreme Court Bar Association function that was conducted in Bangalore, one of the Honorable Supreme Court judges had remarked that if 40,000 cases was felt necessary for increasing the judicial strength to 36, today the average filing per year is 70,000 cases. Sir, we have had this House discuss about vacations, how I do judges not work as hard as others. Sir, I can vouch and say they work the hardest amongst any judges in the world. It is inhuman at the level at which they work, particularly in Supreme Court. 70,000 cases per year. We have increased from 40 to 70,000 cases. The judicial strength of the Supreme Court remains only 36. Sir, we need to increase this capacity by having more manpower. Nearly 1/3 of the High Court judges' appointments, sir, are not made. The pendency is affecting the country's justice delivery mechanism. Sir, my suggestion, therefore, sir, is please control the controllables. Whatever you will be able to do, please attend to them. Sir, when I mention that there has been a crude and Brent price increase, there has been a fertilizer price increase, sir, these things are not in our hands. We would not determine when US would attack Iran and how Iran would respond. But the things that we can do is, sir, we can do a faster adoption away from oil and gas. Sir, let us remove GST on electric vehicles. Let us incentivize electric vehicles. China has moved drastically for electrification of its vehicles and the grid. We need to increase our electricity generation and ensure that the future reliance on oil comes down. Our agricultural policies need to shift so that we don't depend on fertilizers so much. Sir,
privatization of public sector units. The government was never compelled to think of this seriously. This is the time when the government can finally move towards privatization of public sector units. It is something that has been limping along. Sir, we need money. We are going to be constrained in the next year. We are going to have supplementary demands for grants. I urge the finance minister to consider increasing the speed of privatization. That is the promise the government made in 2014 and in 2019 and 2024. Time to act is now. Sir, I always find India reacts best when it is confronted with a crisis. Be it 1991, be it Trump tariffs. I find that the government structural reforms started after Trump imposed tariffs. Sir, look at this conflict as an opportunity we have. Let us kick in the next generation reforms. Let us do the next generation adaptation. Thank you, sir. Thank you. Mani Shri Manas Ranjan Mangraj ji. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I rise to speak on the Union Finance Bill with a deep sense of concern. This bill, which defines the government's taxation priorities and fiscal direction, once again reflects a pattern of systematic neglect of Odisha. While the government speaks of inclusivity, the financial provisions tells a different story. Sir, let me be very clear. Odisha is not asking for charity. Odisha is demanding its rightful share. The government talks about Purvodaya, the development of Eastern India, but I ask, where is Odisha in this vision? When we examine this finance bill, we find no meaningful fiscal incentives, no targeted policy push, and no serious attempt to correct regional imbalance. Sir, taxation is not just about collecting revenue. It is also about ensuring fair distribution and balanced development. Odisha is one of the largest contributors to the India's mineral wealth. Coal, iron ore, and bauxite from our state fuel the nation's industries and contribute significantly to the national exchequer. But what does Odisha receive in return? Limited reinvestment, inadequate fiscal support, and growing regional disparity. This is not cooperative federalism. This is extractive federalism. Sir, we demand a fair revision of mineral royalties and a greater share in the revenue generated from our resources. We also demand fiscal incentives that promote value addition within Odisha so that industries and jobs are created in our state, not shifted elsewhere. Sir, infrastructure remains another area of concern. This finance bill does not provide adequate tax support or financial push for critical projects in Odisha, whether it is railway expansion, freight corridors, or inland waterways like National Waterway 5. If fiscal policy cannot support infrastructure in a resource-rich state, then what is its purpose? If in agriculture the challenges are equally serious, farmers in Odisha continue to struggle with fertilizer shortages, weak procurement, and lack of market access. This finance bill fails to provide targeted relief or meaningful incentives to strengthen the agriculture sector. Sir, there are also important interstate issues like Mahanadi water dispute and Polavaram project, which directly affect our people. The silence of the centre, both policy-wise and financially, is deeply concerning. On tourism, Odisha has immense untapped potential. Heritage sites like Lalitgiri, Ratnagiri, and Udayagiri can become major economic drivers. But without fiscal support and incentives, this potential remains neglected. Sir, this continued neglect must end. Therefore, I urge the government to ensure fair revenue sharing and revision of mineral royalties, provide targeted fiscal incentives for industrialization and infrastructure, strengthen agriculture through direct
financial support and policy measures, allocate resources for tourism and heritage development, address interstate issues with urgency and financial backing. Honorable Deputy Chairman, sir, Odisha has always contributed to the nation's growth with sincerity and strength. But today I must say, our patience should not be mistaken for acceptance of injustice. We demand fairness, we demand equitable fiscal treatment, and we demand rightful recognition in India's development journey. Thank you, sir. Bande Utkal Janani. धन्यवाद मानस रंजन जी. माननीय डॉक्टर एम थम्बी दुरई जी. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. On behalf of my leader, my party, ADMK party, the Deputy Palaniswamy, I ready to participate in the Financial Bill 2026 discussion. At the outset, sir, I would like to appreciate the intent of the Government of India in presenting a forward-looking and growth-oriented budget for the financial year 2027. The Government aims to maintain fiscal consolidation while supporting the economic growth and infrastructure development. The bill shows a balanced approach that maintains continuity and predictability and improves flexibility at administrative activities. Sir, the global environment remains uncertain with the challenges such as inflationary pressures, geopolitical tensions, and supply chain disruptions. Despite this, India continues to stand out as one of the fastest growing major economies. This reflects the resilience of our economy and the strength of policy decisions taken at the national level, sir. I would like to appreciate the focus on rural development and social welfare. Increased allocation for housing, infrastructure, and welfare schemes will directly benefit the common people, particularly those in rural areas. This is in line with the vision of the inclusive development. Sir, as a representative from Tamil Nadu, I wish to draw the attention of this House to certain ground realities. Sir, our honourable member, DMK member, Wilson said, the centre is biased towards Tamil Nadu. Sir, I am for getting more funds for Tamil Nadu, no objection to that. At the same time, he said, your state, Bihar, is getting more money, but your contribution less. But he says Tamil Nadu contribution is more and is getting less. He compared that. That is maybe there. I am not denying that. But at the same time, also for getting more money from the center for the development, I am also for that because cooperative federalism means always our ADMK party feels that federalism, that the states must be given more power, and also especially financial assistance is more important, particularly Tamil Nadu government, sir. But while the union government is making sincere efforts to deliver development across the country, unfortunately, the state government led by DMK dominant Karagam has not been effectively implemented several schemes. Sir, recently, our Honorable Prime Minister visited 3 times Tamil Nadu. Recently, he highlighted that whatever the DMK government is raising, the central government is not funding. That is not correct. What he said, he has Tamil Nadu central government allocating more than 4 times than DMK and the part of the UPA government. That is 4 times they allocated more funds. But this is I am telling quoting the Prime Minister said. This is the implement, sir. Please, will Sanjay take your seat? He never objected you. Please, I am take your seat. Sir, what? Because he raised things, I want to answer. Yes, Bihar is getting more money, he is telling Tamil Nadu is not getting. How can I say, sir? Please speak, please take your seat. Will Sanjay do not disturb? I would urge the state government to work in true spirit of cooperative federalism and ensure that the central funds and schemes are implemented efficiently, transparently, without any bias. Sir, and also, Prime Minister said, we are giving a lot of money for the Tamil Nadu government to implement the central government schemes. But the present DMK failed to implement the central government schemes. That is what he said. But the Chief Minister of Tamil Nadu never refuted that. That is, I am telling. Whatever the Prime Minister recently said,
central government, because central budget is speaking, central budget is giving more fund, but state government of Tamil Nadu not at all using the fund. But where the fund goes, he said, sir, he alleged that the whole fund goes to the one family, dynastic family. That is that because there is a lot of corruption, he said. They are not implementing. Sir, another thing is said, Wilson said, sir, central government loan, borrowed loan, nearly 60 lakh crores increased, he said. All right. I want to come to say Tamil Nadu also. During this DMK period, the loan of Tamil Nadu borrowed loan is increased nearly 10 lakh crores. That is the loan. That especially during the DMK period alone, 5 lakh crores they borrowed. Where it has gone, we don't know, sir. This is the thing. Sir, this is another thing, sir, I want to say. What is... No, I'm telling you, sir. You speak, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है. I'm telling you the real fact. Because the Prime Minister categorically said about the central government contribution, at the same time, why the state government go on blaming the central government with getting so much amount. Many central schemes are given. They are not properly implementing. And there are also a lot of corruption also is said. Corruption is there, a lot of corruption in Tamil Nadu. That is why Tamil Nadu could not develop. Please. Sir, another thing he said, what he said, Stalin thodarattum, Tamil Nadu vellattum. That means Stalin will continue and Tamil Nadu vellattum. That Tamil Nadu going to succeed. I could not understand. He said that is why I'm answering that. Because Stalin can, thodarattum means continue, means what to continue? Not the government. Because people decided to throw the DMK government. That is a fact. How can you continue? Tamil Nadu vellattum means that can be Tamil Nadu can be successful means this is under the leadership of Yadapadi Palaniswamy. Please speak on the budget. And the budget alliance that is going to win. I am the budget. Yes. Because when he is quoting all these things, I am answerable to that. Because I preside over when you are sitting, sir, same way, I never refuted what he said. This is because I am here, I have to refute the charges, what he is telling. Because Stalin 2020 cannot win. Only Yadapadi Palaniswamy alone with the NDA alliance, they are going to win. We are going to get the good government. Now corruption will be taken away. To the central. The corruption, because of the corruption, Tamil Nadu is spoiled. The DA government sent. Please come on, budget. Let them refute it. But 2G spectrum, sir. Yes. 2G spectrum. When the DMK government is the UPA government, big scandal, spectrum scandal. Not only scandal. So many scandals that took place in UPA government. DMK is the part of the government at the time. Then how can they criticize the central government now when they are getting sufficient funds, sir? Speak on the budget now, sir. On the budget. And also, sir, my request, my constituency I want to tell. I many times requested railway minister to have the railway line from Puducherry to Tiruvannamalai, Jolarpet to Krishnagiri to Hosur and Bangalore. Three states will be connected in that. Because I am very grateful our Tamil Nadu, our Prime Minister Modi ji declared Hosur is the defense corridor. He has declared that. Therefore, that declaration is coming, we need good railway line. Same thing, sir, I represent once Karur, many times Karur parliamentary constituency. There is a demand for always Coimbatore to Karur, Karur to Tiruchirappalli. 8 lanes roads that is to be done. Still, that is not taken. I am requesting that central government. And also, the airport. I don't know what happened. Tamil Nadu Green Airport, Parandur. It has to be, but the DMK government is telling they are going to bring. They cannot see that get up any movement. It is taking place. That I am urging the central government to see that that has to be done. And also, sir, that mainly I want to once again to tell. During Yadapadi Palaniswamy,
23 medical colleges he established. That is historical thing he did. And also 7% reservation for the students studying in the government school getting MBBS admission. He's made a historical thing. Now he promised that can be increased 10% because the rural students getting the admission is difficult nowadays. You know that coaching centers are more. Their coaching centers cannot go and attend the Tamil Nadu rural students. Therefore, he brought a novel scheme to benefit the students, especially rural students who are studying government schools. From 75% to 10% he promised. That whatever DMK, ADMK government promising, they are fulfilling, sir. But the DMK government for 543 promises the election manifesto said, but nothing they have done. The people are very much know that. Therefore, I am telling, Kadapari Palaniswamy is going to be Chief Minister of Tamil Nadu coming in 20 election with the support of the Indian government. DMK cannot total. Thank you. Cannot total. That cannot be done. Thank you. Thank you very much, sir. माननीय श्री के.आर. सुरेश रेड्डी जी, ऑनरेबल के.आर. सुरेश रेड्डी. Thank you, Deputy Chairman, sir. It's always an honor and comforting to speak when you're there in the chair, sir. Please. Thank you for the opportunity to speak on the finance bill. This is being discussed at a very critical juncture, Deputy Chairman, sir, with a lot of uncertainty looming large. The other day, the Honourable Prime Minister has assured both the houses that the country need not be in any state of worry. We are all well prepared. But also a word of caution was very clearly exhibited through the Honourable Prime Minister's statement, sir. So when caution comes to mind, then the first thing which comes to our concern and worry is the people in the country at large, and more importantly, the rural people. And when we talk about rural people, we talk about the agriculturists, the land laborers who are so dependent on each other. So in such conditions, we are discussing the finance bill, sir. There's a great possibility that the BE and the RE, the budget estimate to revised estimate, could be varying in a very big volumes. I'm sure the government could be prepared on that fact. But what really worries me is the Kharif season is just 3 months away from today, sir. So when we talk about the Kharif season, the first thing again which comes to our mind is the fertilizer supply. And when we look at fertilizer supply, whether we can ensure that for a production of fertilizer, heavy dependence for urea especially is on the gas, where 90% comes from overseas, and the kind of issues happening in the Gulf War definitely indicates that there could be a shortfall on fertilizer supply, sir. And this not only happened this year, but even last year we have seen, and last year was a very good example of bad management in Telangana, sir. Telangana faced a huge urea crisis last year. Yes, farmers protested. Police lathi-charged on them. It is for the first time after the formation of Telangana state that the police had to intervene and lathi-charge just to regulate the urea supply. So we would not like such a thing to be repeated, sir. The government should take precautions. The government should advise the states and ensure that whatever is the availability, then it should be equitably distributed. Government of India, especially the Honourable Finance Minister, through a lot of others, previous speeches, she has been very, very focusedly propagating the idea of organic fertilizer, Deputy Speaker, Chairman, sir. Now this, in my opinion, is an opportunity in adverse times. Global uncertainty with a local opportunity. We have to strengthen our soil. India's arable agriculture soil area is under tremendous stress. It needs to be rejuvenated. It needs to be reinvented. It has to be made more feasible, and friendly environment has to be created, and at the same time, the fertilizer supply had to be ensured. So keeping both these, of balancing organic and also ensuring at least a limited fertilizer supply, in my view, the biggest contributor in this today could be the wet waste available in the urban areas, sir. Today, I was told that India generates almost 30 million tons of urban waste every year.
Now, where is this urban waste going? It is going into dumps to fill all the empty areas, which in turn is creating pollution, the methane gas emanating from there as causing a lot of health hazards. So there is this window of opportunity. If the government is serious, they can really take it up. It has to be scientifically processed. Some waste can become our organic manure, and also it can restore the soil health, which is under tremendous stress, Deputy Chairman, sir. Even though it may not be a direct supply or a component to the urea, but definitely it can complement the shortfall through organic waste material, which if it is composed and given could go a long way. Now this requires, Deputy Chairman, sir, a very strategic approach. You have to get into a mission mode to ensure this. So there are various ways and means of ensuring this, and I'm sure the government would definitely work in this, because there's a policy exists, the funds exist, the intent exists, but it's all scattered. It is here the finance minister's intervention, because she's got that institutional strength. She can form a team with the various ministries and ensure that this becomes a big, big project. When UPI, the payment, digital payments came in, people were very skeptical. लोग समझे नहीं कि कामयाब होने वाला है, मगर 5 साल में आप बताएं कि ये कामयाब हो सकता है. अभी ये अपॉर्चुनिटी you have to take it, experiment with it, and India will be a great success story, because organic waste through wet waste is not really a success story in most parts of the world. India should lead by example, and this time and this opportunity in this adverse conditions could be a golden opportunity for the government to take up, sir. Talking about the issues, I just saw the confrontation between two honorable members, DMK and AIDMK, and this primarily was on elections. And today, election issues and election promises are each party is trying to outbid the other. Today, the other day, to quote and to bring to the notice of this August House, in Telangana, my party's working president, Mr. KTR, introduced a private member bill saying that whatever election promises are made, that should be mandated and made into a legislative act. So that brings in a sense of responsibility. Today the Supreme Court is debating on it. Supreme Court also has its own sensitivities. They cannot get into the other domain. We cannot get into that domain. And yesterday the Honorable Parliamentary Affairs Minister said, MPs should not abdicate your duties. You have to legislate, you have to work on this. So, keeping this in mind, Deputy Chairman, sir, I would suggest a legislation made by our BRS working president, Mr. KTRG. It is called the Telangana Abhyastam. Now, when this was introduced in Telangana Assembly, it became a big national debate. The entire social media is flooded. Yes, because this brings in morality into politics. This strengthens our democracy. This reassures the people that what they heard will be delivered by whoever is going to come and govern. Because in Telangana, the Congress government the Congress party made various promises. But it's 2 years since they came into power. Most of it is not fulfilled. So today, Deputy Chairman, sir, I would suggest that a legislation as initiated by KTRG should be got through the House and leave the Supreme Court out of it, which is in our domain. Let us debate on it, let us deliberate on it, and let us come up with the proper legislation. The other thing which comes to my mind as I'm running short of time is the Gulf War, Deputy Chairman, sir. The most affected people in Gulf War today are the Indian diaspora, which constitute mostly 80 to 90% of Indian labor, and these labor are mostly from Telangana. And when you see the remittances of your foreign currency coming in, almost 60 to 70%, the remittances what India receives comes through the people, these hard-working people, जो उनके खून को पसीने तरह बहते हुए, they contribute to our Indian economy. वो लोग परेशान में हैं. मैं चाहूँगा कि finance minister should assure them कि भाई वहाँ कुछ लोग मर रहे हैं, तो उनके लाश लाने में भी आज बहुत तकलीफ हो रही है. अगर वो लोग कोई नौकरी छूट जा रही है तो वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद भी उनको मुसीबतें हैं. So I request the government to look into this matter, and thank you for the opportunity given, sir. Thank you. Dr. V. Sivadasan. Respected Chair,
I raised to some of the very serious issues affecting our people. Many Indians working in West Asia are facing distress due to US-Israel aggression. Indian workers in West Asia are worried about their safety, their jobs and their future. In such a situation, the government must act quickly and ensure their protection and support. We are the largest group of citizens in the world, but our government is very silent, Mayangji, very silent. So the treasury benches are talking about Amritkal, but for India, it is Vinashkal. Sir, the fine print of this bill reveals a Vinashkal for the common people. US, under the presidency of Trump, has declared a war on the world. Indian government has declared a war against the common people of our nation. The people are facing serious crises, difficulties in their daily lives. Across many places, families are being forced to cancel weddings, some small functions, and some of the gatherings because they are unable to get LPG cylinders. Sir, LPG is not a luxury; it is the necessary item for a house. When people cannot access cooking gas, it directly affects the daily life of the people. Because of the shortage of the LPG, people are now forced to buy LPG cylinders in the black market at very high price, but government is not ready to address the issue. This is putting an extra burden to the people. It is also showing the failure in supply and monitoring. Sir, small business subsidy catering are also suffering. The government claims that the policies are helping the people, but the people are struggling because of the policy of the government. Sir, the government, they are not ready to protect the people. The bill is also an insult to the states. By manipulating the cess and surcharges which are not shared with the states, the center is pocketing the lion's share of the revenue. You demand that the states implement your own project. You talk of cooperative federalism, but practice is coercive centralization. Sir, states like Kerala, Tamil Nadu are being financially struggled because they are there to prioritize social welfare. The finance minister speaks of rationalizing taxes, but for whom? Sir, here the government is practicing the charity to the corporates by the government, not the charity of the corporates. You have reduced the minimum alternate tax from 50% to 40% and allowed MAT credits to be set off under the new regime. You continue to grant tax holidays to some of the companies until 2047. You are giving lot of favors to few corporate houses, and you are denying level playing ground fields to the other companies. Medha Raghunath Reddy is sitting here. I think you know very well how the in-house are running. Sir, here, if level playing ground is here, then the future of the nation will be changed. You are stealing the thali of the common people. You are stealing the thali of the common people. Meanwhile, the common man is doing in regressive indirect taxes, while corporate taxes, collections as a percentage of GDP remain stagnant. The government reliance on GST and fuel excise is an all-time high. Sir, recently in Rajyasabha, here I raised a question regarding the GST rate reductions. In response, the Ministry of Finance made a shocking admission that no proper study has been conducted to check whether GST rate cuts have actually benefited consumers. We were told that GST rates were reduced for more than 350 times by the GST Council, and that this would reduce prices for the common people. Sir, but today the government itself admits that it has not verified whether these benefits have reached the people. Why is there no mention of wealth tax or an inheritance tax? If the government truly cares about equity, let it tax the one person who owns more than 40% of the nation's wealth. Sir,
they are selling the sovereignty of the nation. This finance bill facilitates the monetization of our national soul. You are opening nuclear power to private players. You are allowing 100% FDI in insurance, handing over the life saving of our citizens to foreign capital. Sir, these are not just assets. These are the fruits of decades of public labor. This is not disinvestment. It is the old style loot of the public sector. Respected Chair, the democratic India has witnessed the second assassination of great Mahatma by the Shishyas of Nathuram through the V.B. Gramji. Sir, they have issued a death sentence to MGNREG, the lifeline project of rural India. What is the crime of MGNREG? It offered mild relief to the common people of the nation, and you consider it is a crime. So, sir, this finance bill is an aggression on the people. So, I stand against this financial. Thank you, sir. Thank you. Shriman Ramji Lal Suman ji. Shriman Ramji Lal Suman ji. सभापति जी, ये सदन वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा कर रहा है। सरकार के मुताबिक हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और 2028 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। सभापति जी, महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में गरीब आदमी कहां खड़ा हुआ है, ये एक विचारणीय सवाल। और मैं समझता हूं कि सरकार के जो काम करने का तरीका है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार की सरमाएदारों पर ज्यादा कृपा है और गरीब आदमी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ हमारे देश में नहीं हो रहा है। चंद अमीर ही इस देश में देश नहीं है, ये देश तो गरीबों का देश है। अदम गौड़वी ने ठीक ही लिखा है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो मैं समझता हूं इस सरकार को असली हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। और सभापति महोदय, अगर आप देखेंगे तो 2000 के बाद क्रमशः इस देश में जो दौलत वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ। 2014 में गौतम अडानी विश्व के अमीरों में से इनका स्थान 690 पे था, अब ये 31वें नंबर पर हो गए गौतम अडानी, और इनकी संपत्ति में 18 गुना इजाफा हुआ है। सभापति महोदय, अडानी और अंबानी हिंदुस्तान के पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी दुनिया में 21वें स्थान पर हैं। सभापति महोदय, ये जो दौलत में इजाफा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ये बगैर सरकार के संरक्षण के तो हो नहीं सकता। और मैं बहुत विनम्रता के साथ सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि दिखाने को तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में अडानी और अंबानी की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। ये हालत हमारे देश में। अरे क्या बोले आप लोग? Please speak on the bill. Please speak on the bill. Please speak on the bill. Please, no cross talking. No cross talking. Please speak on the bill. सभापति महोदय, प्लीज। सभापति महोदय, हम कितने गुरूर में हैं, हम कितने गुरूर में हैं। भूख का जो सूचकांक है, उस सूचकांक में 1 से 23वें स्थान में से हम 1 से 2वें स्थान पर हैं। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सभापति महोदय, किसान की हालत बहुत खराब। आज हालत क्या है? लोग खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। सभापति महोदय, अभी प्रकाश में आया है कि पूरे हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, एटा में, कन्नौज में आलू किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के विदर्भ में और अभी पंजाब में किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, किसान संकट में हैं। और कुल मिलाकर के कितना हमने समर्थन मूल्य घोषित किया है विभिन्न जिनसों का अलग सवाल है, लेकिन एमएसपी का लाभ किसान को मिलता ही नहीं। और मजेदार बात यह सभापति महोदय, इससे ज्यादा मजाक और क्या होगा, अभी 24 मार्च को देश के कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में कहा, जब ये कहा गया कि साहब किसान की आय तो की प्रतिबद्धता थी या दूना करेंगे, तो कहा कृषि मंत्री ने कहा किसान की आय तो 4 गुना और 8 गुना बढ़ गई है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो सकता है सभापति महोदय? कोई सरकार इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। और मैं समझता हूं ये किसानों के साथ मजाक है। इस देश में जितना शोषण आज किसानों का हो रहा है, उतना किसी और वर्ग का नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, स्थिति आज क्या है? सभापति महोदय, मैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और डॉक्टर अम्बेडकर के इस देश में मैं हिंसा की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सभापति महोदय, जब आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ेगी तो समाज में तनाव पैदा होगा। आज स्थिति क्या है सभापति महोदय? आज स्थिति यह है कि देश के 1% लोगों के पास 40% देश की दौलत है और 2% लोगों के पास हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा दौलत। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में संपत्ति का समुचित बंटवारा नहीं होता। यह वो स्थिति है जहां सामाजिक तनाव पैदा होता है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, यह सरकार जानबूझ करके इस देश में तनाव पैदा कर रही। आप तो बहुत अच्छे आदमी है, 2 मिनट और लूंगा। टाइम खत्म हो रहा है सभापति महोदय, 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए के हम कर्जदार थे। आज हम 200 लाख करोड़ के कर्जदार हैं। हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर हो गया, हमने अपने पैरों पर खड़े हो गए। किस गलतफहमी के शिकार हैं? थैंक यू। दुनिया का बेशुमार कर्जा अब आपके ऊपर है। 26% तो बजट का हिस्सा सभापति महोदय ब्याज में चला जाता है। सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। सभापति महोदय, असल सवाल क्या है? अब युद्ध का माहौल था, सरकार ने संसद में बयान दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के खिलाफ सरकार ने नहीं बोला। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा, इस देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 27th of March 2026, has adopted the following motion: that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of the last week of monsoon session 2026. Thank you. There are a couple of words in the previous one. We will just examine them. Shriman Chaudhry Mohammad Ramzanji. Thank you, Chairman Sir. फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए मैं उठा हूँ। कई सालों से हम ये सुनते आए हैं कि हमारा मुल्क भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकानमी बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे ये तो दुनिया की नंबर 1 इकानमी बने, उससे हमारे लोगों का भी भला होगा। लेकिन जो गलफार अभी चल रहा है, अभी 22 दिन है, पहले तो कहा जाता था 2 दिन में हम ये ख़त्म करेंगे, ईरान को ख़त्म करेंगे, इसकी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, इसका सारा कुछ ख़त्म कर दिया है हमने। लेकिन अभी हम 26 डेज में हम शायद आज हैं गलफार के। आगे ये कितना आगे चलेगा, गॉड नोज बेटर। तो इस पर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इस हाउस में आए थे, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं particularly regarding this energy, जिसमें पेट्रोल आता है, डीजल, गैस वगैरह, तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने हालात को समझा और इस पर इनिशिएटिव लिए। लेकिन एक चीज़ रह गए हम कि हमारा मुल्क जो है हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, बल्कि हमारा मुल्क जो था ये इट वाज द फर्स्ट कंट्री
जिन्होंने नॉन अरब नेशंस में PLO को तस्लीम किया था, जिस वक्त यासिर अरफात थे, चला रहे थे तहरीक, और हमने समझा था उस वक्त हमारे मुल्क की ये दे आर फाइटिंग ए जस्ट काज। बहरहाल उसमें उस हमले में उनके सुप्रीम लीडर भी गुजर गए, बाकी जनरल्स वगैरह तो जंग में होता ही है, इधर का उधर, उधर का इधर होता है, लेकिन एक रूहानी पेशवा मुस्लिमों का वो चले गए, तो उस पर बड़ा दुख है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई यहाँ पर वो जताया नहीं कि हमें इस पर दुख है, हमें भी इस पर दुख है, क्योंकि इस मुल्क में करीबन 22 करोड़ से भी ज़्यादा ये मुस्लिम आबादी रहती है, और अराउंड सारे इस खिते में एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुस्लिमों की है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर कहना चाहिए था कि हम इनके जो दुख है, इनका जो परेशानियाँ इस सिलसिले में हुई है, तो हम इसके साथ। बहरहाल आगे अभी टाइम आएगा उनको भी, और मैं समझता हूँ भारत एक बहुत बड़ा देश होने के नाते इनको अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करना चाहिए, किसी न किसी सूरत में जंग को रोकना चाहिए, वरना इस जंग की लपेट पे पता नहीं कितने मुल्क दिवालिया होंगे और क्या क्या आगे बनेगा, और उसका डायरेक्ट असर जो है आम लोगों पर पड़ेगा। मैं रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसके बारे में अभी कहा, तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको तवज्जो दे दूँ, क्योंकि हमारे स्टेट में करीबन 6 साल के बाद हुकूमत एक वहाँ पर आई, और मैं आपको यहाँ पर ये हाउस में बताना चाहता हूँ, सिंस 1947 जम्मू कश्मीर हैज़ गॉन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल 10 टाइम्स, और 2 बार तो स्पेल इनका जो था गवर्नर रूल्स का, इट वाज मोर देन 6 years between 90 to 96, and then again 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल का बीच में सबसे बड़ा लंबा स्पेल रहा है। 90 से 96 तो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि मिलिटेंसी थी, पार से जंग हम लड़ रहे थे, मिलिटेंट लोग आते रहते थे, लोगों की किलिंग होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन ये जो हमने देखा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कुछ भी हुआ, ये समझ में नहीं आया। 6 साल के बाद लोगों को ये हक मिला कि वो अपनी सरकार चुने, उन्होंने सरकार को चुना भी, मैसूर मैंडेट के साथ एक सरकार वजूद में आई। लेकिन मैं फिर अफसोस से कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि विदाउट एनी पावर्स हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से सारे स्टेट की कार्रवाई चलती है, नॉर्मली ये होता था विद द चीफ मिनिस्टर, अब ये जनरल डिपार्टमेंट ये बन गया है LG का एक डिपार्टमेंट, और बहुत कम रोल होता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इसमें। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू वगैरह जो है वो भी उन्हीं के हाथ में। जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारा जो GSDP का स्टेट का जो है वो 2.70 लाख करोड़ है, और उसमें जो इकानमी जो ग्रो हो रही है हर साल, ये 5.82% के हिसाब से बढ़ रही 25-26 का जो आधार है, और दिस इज बेटर देन हिमाचल एंड दिल्ली। तो इस GSDP में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो करीबन 78% हमारे GDP को कंट्रीब्यूट करता है, और इसी तरह जो टूरिज्म सेक्टर है वो 77% कंट्रीब्यूट करता है हमारे GSDP को। तो करीबन ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 70% पॉपुलेशन इसमें हमारे रोजगार हासिल करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर टूरिज्म जो हमारा है वो हमेशा शिकार हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ा गया है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मामूली कहीं पटाखा हो जाए तो टूरिज्म सेक्टर हमारा बैठ जाता है, और ये जो कंट्रीब्यूट होता था ये 9% 10%, ये एकदम ठप के गिर जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार होते हैं। एक होटल जिनका आज 1 लाख रुपए एक कमरे का भी नहीं मिलता है कमरा, वो जब ये हालात होते हैं तो यही 1 लाख वाला वो 5,000 में भी ऑफर करते हैं, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपके यहाँ पर।
तो मैं समझता हूं कि ये टूरिज्म सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। हमारा वर्ल्ड फेमस हमारे 2 टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक तो पहलगाम है, दूसरा गुलमर्ग है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सब साल से लोगों के पास लीजेस हैं और हर साल वो लीज का रकम देते थे, लीज अमाउंट, उसका जो फीस टैक्स होता था हर साल देते थे। लेकिन पिछले 5 साल से 6 साल से जब से ये प्रेसिडेंट्स रूल पहले रहा फिर गवर्नर्स रूल, तो पीपल ऑफर कि ये हमारा है ये लीज अमाउंट, प्लीज टेक इट। 700 साल के लीजेस उन्होंने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ये लीज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसी तरह मार्केट्स का आप हाल देख लीजिए। मार्केट जितने भी कश्मीर में बन गए हैं, बड़े बड़े मार्केट, छोटे मार्केट, बाय एंड लार्ज वो तो सरकार की जमीन पर सरकार ने बनाए हैं। सरकार बनाने का मतलब है एक प्लान के तहत वो मार्केट्स बन चुके हैं और बाज़ाब्ता सरकार उनसे किराया लेती है उनके, वो भी नहीं होती है। हमारा लाल चौक से जो फेमस लाल चौक है, वर्ल्ड फेमस लाल चौक, up to Residency Road area, this Gulmarg, this Pahalgam and the markets जो around हैं सारे स्टेट में, वो इस वक्त सरकार के तहवील में है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार करना क्या चाहती है, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो लीज में। डू दे वांट कि वो हम गुलमर्ग भी छीन लेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से, पहलगाम भी छीनेंगे और सारे, और फिर दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को दे देंगे। 370 तो हटाया उन्होंने, आप तो चल रहा है। हालांकि नहीं सर, मेरा ओके सर, एक दो मिनट दे, प्लीज कंक्लूड, प्लीज 2 मिनट सर। तो मैं चाहता हूं कि ये लीज जो है ना, ये रिन्यू करनी चाहिए और ये फ्री होल्ड होनी चाहिए। दूसरा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में 2 मिनट कहूंगा। कंक्लूड करें, 30 सेकंड, बस कंक्लूड सर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं सिर्फ यह कहूंगा, रियासती जम्मू कश्मीर में पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, फर्टिलाइजर जो है स्पूरियस किस्म के आते हैं। ना सिर्फ उसमें प्रोडक्शन पर असर होता है, लेकिन बागों के बाग अब खत्म हो गए हैं। मैं चाहता हूं क्वालिटी कंट्रोल इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए मरकजी सरकार को, स्टेट सरकार को इन कोऑर्डिनेशन में उनको वो देखना चाहिए कि इस बड़ी इंडस्ट्री को कैसे बचाए जो 78% कंट्रीब्यूट करता है और रियासत के करीबन 70% पॉपुलेशन को भी, ये 78% GDP का कंट्रीब्यूट कर और 70% पॉपुलेशन को सहारा देता है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू। श्रीमान मस्तान राव यादव बीड़ा जी। Chairperson sir, I rise to speak to support the Finance Bill 2026 on behalf of our Telugu Desam Party and our leader Sri Nara Chandrababu Naidu garu. Sir, this Finance Bill 2026 rests on 5 principles. 1. Trust-based tax administration. Number 2, ease of living for common citizens. Number 3, empowering the MSMEs, farmers and cooperatives. Number 4, making India a stronger global business hub. Number 5, customs reform. Sir, trust-based tax administration and legal framework. The Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026, a new chapter allows small taxpayers to declare small overseas assets up to 5 crores or undisclosed foreign income up to 1 crore without facing prosecution, providing immense relief for the inadvertent omissions. Sir, discrimination and reduction of punishment. The bill marks a clear shift away from a penalize first approach by rationalizing criminal provisions under the income tax framework. Sir, revised and updated returns. To facilitate compliance, taxpayers are now permitted to update or revise returns even after reassessment proceedings, subject to an additional 10% tax. Additionally, the time limit for revised return extended to 12 months from the end of the relevant tax year. Then, Dispute Resolution Committee. The DRC empowered to waive penalties and grant immunity from prosecution for small and medium taxpayers, aiming to reduce litigations. Sir, middle class and ease of living reliefs. Collection of tax at source. TCS for remittances under the liberalized remittance scheme, that is LRS, for education and medical purposes has been slashed from 5% to 2%.
Similarly, the TCS on overseas tour packages has been significantly reduced from 20% to 2%, while the threshold limit for 20% TCS applicability has been completely removed. So, tax deducted at source. A new system allows certain depositors to directly accept declarations like Form 15G and Form 15H and distribute them on behalf of senior citizens and small savers, ending the hassle of submitting multiple physical forms to different agencies. Sir, exemption for disability pension. A statutory tax exemption has been granted for disability pensions. Then, amendment of first schedule. Passenger allowances, tariffs on gifts and rules around personal imports have been rationalized to reduce daily disputes at airports. So then, agriculture, MSMEs and cooperatives. Deduction in respect of income of cooperative societies. Primary cooperative societies now enjoy tax deductions now not just for supplying milk, fruits and vegetables, but the ambit has been expanded to include cattle feed and cotton seed. Deduction for inter-cooperative dividends. Dividend income received by federal cooperatives from their investment is now tax deductible under the new tax regime, provided it is distributed further down to the members. Special provision for fishing and fishing-related activities. Indian flagged fishing vessels operating beyond India's territorial waters can now bring harvested fish into India completely free of customs duty, sir. Then data centers and digital infrastructure. To prevent foreign cloud providers from setting up hollow operations, tax holidays up to 2047 are now strictly tied to structural conditionalities and domestic value creation. The physical infrastructure must be built and operated locally, and all sales to Indian users must be routed through an Indian reseller entity. Sir, here I wanted to bring you to our kind notice, while the previous government between 2019 and 24 stalled progress, destroyed the state economy. But now our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu committed to revive and complete pending projects. For your kind information, sir. With these words, I support this Finance Bill 2026, sir. Thank you. Thank you. Dr. Sikandar Kumarji. सर, आपने फाइनेंशियल बिल 2026 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मान्यवर, जो फाइनेंशियल प्रपोजल इस फाइनेंशियल बिल 2026 में माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में रखे हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। यह बिल तुष्टीकरण अपीजमेंट का नहीं बल्कि संतुष्टिकरण सेटिस्फैक्शन का प्रमाण है। यह बिल गरीब, युवा, महिला और किसान को और अधिक सशक्त करने का बिल है। मैं इस बिल का इसलिए भी समर्थन करना चाहता हूं कि अगर हम विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बीच में अगर आज देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी मेरे विपक्ष के मित्र जीडीपी के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज के दौर में 7.3% की दर से सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आज भारत दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। मान्यवर, मैं इसलिए इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। अगर पिछले एक दशक में हम देखें, आर्थिक नीतियों पर हम गौर करें तो मोदी सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया हुआ है। अगर फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का अगर हम देखें तो 4.9%, 2025-26 का 4.4% और इस वित्तीय वर्ष में
2026-27 में 4.3%, ये दर्शाता है कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके ऊपर हम कर्ज नहीं डालना चाहते। अगर डेट टू जीडीपी रेशो हम अपने देश भारत की देखें, अगर 2024-25 में जो डेट टू जीडीपी रेशो 57% थी, 2026-27 में वो 55.6%, और वित्त मंत्री जी ने ऐसी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है कि 2030-31 तक इसको 50% तक लाने का लक्ष्य तय किया है, जो ये दर्शाता है कि हम भविष्य की पीढ़ियों को कर्ज के बोझ के तले नहीं डालना चाहते। महोदय, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पिछले वित्त वर्ष का देखें 2025-26 का, तो 11.11 लाख करोड़ रुपया, और इस वित्तीय वर्ष में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 12.2 लाख करोड़, जो ये दर्शाता है कि हम रोजगार के और अवसर पैदा करना चाहते हैं और विकास को और गति देना चाहते हैं। मान्यवर, इस वित्त वर्ष में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर खोलने का इसमें जिक्र है। इसलिए मैं इस फाइनेंशियल बिल का समर्थन कर रहा हूं। मैं इसलिए समर्थन करना चाहता हूं कि अगर 2014 से पहले अगर हम देखें तो मेट्रो नेटवर्क जो मात्र 250 किलोमीटर का हमारे देश में था, आज एक दशक में वो बढ़कर 1100 किलोमीटर हो गया है, और इस वित्त वर्ष में भी इसे बढ़ाने के प्रस्ताव हैं इस फाइनेंशियल बिल के माध्यम से। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मान्यवर, अगर रेलवे का 2014 से पहले हम देखें और पिछले दशक में जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसके लिए मैं रेलवे मिनिस्टर को और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हमारे देश में हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस बिल का समर्थन कर रहा हूं कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से इस देश में प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इस न्यू इनकम टैक्स के माध्यम से जो टैक्स स्ट्रक्चर में रैशनलाइजेशन किया है, उसे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और जो पिछले साल सितंबर 2025 में जो जीएसटी की 4 स्लैब्स को घटाकर 2 स्लैब किए गए थे, उसमें बहुत बड़ी राहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने हमारे 140 करोड़ देशवासियों को दी है। उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके माध्यम से 5 किलो अनाज 80.35 करोड़ देशवासियों को मिल रहा है, आगे भी ये मिलता रहे, जो इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन करता हूं कि प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके अंतर्गत गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपया किसान निधि के रूप में मिलता है, इस बिल में जो फाइनेंशियल प्रपोजल रखे गए हैं उसमें प्रावधान किया कि आगे भी ये गरीब किसानों को मिलता रहे। इसलिए मैं इस बिल का जो है वो समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, जो आयुष्मान योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 56 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है, और अब 70 वर्ष से ऊपर जिनकी भी आयु है सबको इसमें सम्मिलित किया गया है, और आगे भी ये योजना चलती रहे। 5 लाख का बीमा कवर जो है वो मेरे 1.5 अरब देशवासियों को मिलता रहे, इसके लिए भी मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, बजट में 2026-27 का अगर हम देखें तो कुल बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष से वित्त वर्ष से 7.7% अधिक है, जो ये दर्शाता है कि सरकार
जो है इस देश में विकास को और तेज गति से आगे ले जाना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, गरीबी खत्म करना चाहती है। मान्यवर 2014 में जब हम फ्रेजाइल 5 में से थे और आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारे आर्थिक प्रबंधन और वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही प्रमाण है। मान्यवर, यह बिल आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स रैशनलाइजेशन, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संकल्प है। 2014 से पहले मान्यवर, जब हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जो है 15 पैसे जो है पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं, जब पिछले दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी जो यूपीआई स्टार्ट किया, उसके माध्यम से एक तो करप्शन पे अंकुश लगा और जो लेन देन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई और डीबीटी के माध्यम से फरवरी 2026 तक 3.48 लाख करोड़ की बचत हमारे देश में हुई और 5.2 करोड़ जो फर्जी लाभार्थी थे उनको आधार लिंकिंग के माध्यम से बाहर किया गया। ये बहुत बड़ा जो है वो प्रमाण है। महोदय, जल जीवन मिशन के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इन फाइनेंशियल प्रपोजल के माध्यम से इस बिल में रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जिनको पानी का प्रावधान हो गया है, आने वाले समय में जिनको नहीं हुआ है उनको भी पीने का पानी, स्वच्छ पानी मिले, वो जो प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज जो फाइनेंशियल बिल 2026 इस सदन के सामने है, वह समावेशी विकास की यात्रा का बहुत बड़ा पड़ाव है। विपक्ष अक्सर आंकड़ों पर सवाल उठाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी यह मानता है कि जो वित्तीय समावेशन भारत के 6 साल में हासिल किया, उसे हासिल करने में सामान्य परिस्थितियों में लगभग 47 वर्ष लगते। यह बिल देश के मध्यम वर्ग को राहत देने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला बिल है। मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं और सदन से इसे सर्वसम्मति से इसका समर्थन करने का आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Shriman Derek O'Brien ji, not present. Dr. Fauzia Khan ji. Thank you, sir. Sir, in spite of all my admiration for Honorable Finance Minister, I want to oppose this bill in a language of concern. Because of what this bill does is to undermine the very conditions under which the country can grow. Before we speak of development, sir, we must ask whether we are sustaining the nation. Sir, this bill carries retrospective tax amendments. Through provisions like the newly inserted section 292BC, it uses the words notwithstanding anything contained in any judgment, overriding court rulings that struck down tax orders on procedural grounds. Courts have spoken, sir. The bill silences them. For years, 2012, the Vodafone retrospective tax bill was condemned as a betrayal of investor confidence. In 2021, it was corrected. Amendments were made to restore its certainty, to tell the world that India reflects the finality of law. Today, with this bill, we are walking that promise back. The OECD's tax certainty surveys have consistently found that retrospective changes in domestic law are among the top concerns for investors in emerging markets. Sir,
to take India from 142 to rank 63 on the Ease of Doing Business Index. It was a decade of effort, I understand that. Tax unpredictability, sir, quietly erases it. When a business cannot price legal certainty into its plan, it does not plan. It leaves. Imprisonment for several offences has been reduced from 7 to 2. For others, the punishment is now only a fine. I would ask the House to hold two facts together. India's central tax to GDP ratio stands at around 11 to 12%, against an OECD average of over 34%. And there are, as per CBDT data, over 5.8 lakh pending tax litigations, the vast majority involving individuals and small businesses, not large corporates. Ma'am, these are ordinary people who face the weight of notices, penalties, prosecution. Meanwhile, this bill extends leniency to those who have the least excuse for non-compliance and the most resources to comply. Sir, a nation cannot sustain itself on a social contract this unequal. Sir, household financial savings have declined sharply. Sir, just give me half a minute. Youth unemployment remains above 16%. The rupee faces sustained pressure, touching record lows against the dollar. We are not in a position to observe the consequences of bad fiscal policy. We cannot afford a bill that makes investors uncertain and makes the powerful comfortable, sir. A finance bill is a statement of priorities. It tells this country who the state stands behind. And this bill does not stand behind the right people. I urge the government to withdraw these provisions. We cannot build a developed India as a foundation. We keep shifting beneath our feet, sir. Thank you. Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, sir. I stand to oppose the finance bill, sir, and it shouldn't be a surprise. Sir, with regards to the response that Honourable Minister made in the floor of the House in the Lok Sabha, she called it the Reform Express. I appreciate the fact that she's speaking about the Reform Express, but what she has not spoken about or was ignored as part of her response is the rough terrain that we are going through. This Reform Express is going through and stands to get derailed if we do not speak to the people of this country through the Parliament, sir. Sir, rupee is at a historic low of 94 rupees 70 paise against the dollar. Foreign investors have withdrawn over 1 lakh crores since January 2026. Oil prices have crossed at $120 a barrel, and we are dependent. 85% of our energy security needs comes from through other countries, sir. So this Reform Express stands to get derailed if we do not address this. This could have very well been addressed through a Parliament discussion, which was denied to the opposition. We had several ministers come and make a speech, but they did not give the opposition a chance to seek clarification, sir. So that forms a very important part of the finance bill, the rough terrain that it is undergoing, the Reform Express is undergoing. Sir, excise cut was announced today, and it was spoken about greatly outside, and we were told that Prime Minister is going to be felicitated by the Bharatiya Janata Party MPs for the bold decision he has taken. So how can we forget that within the first week of Israel attacking Iran, there was an LPG price rise which put a further burden on the people of this country, sir. Sir, since I have very limited time, I would want to definitely express request Honourable Minister to look at withdrawing the she has withdrawn the income tax exemption on disability pension for our superannuated soldiers. I would request her to withdraw this simply because it adds further financial burden on our soldiers and our people who have served us at the borders, sir. Sir, in the appropriation bill, I'm grateful to Honourable Minister that she had responded, but she made an unfortunate comment, and I seek your protection here, sir, where she said I had misled the House when I said appropriation bill in the Lok Sabha was passed in 3 minutes. So I'd just like to bring to your notice that in the Business Advisory Committee, usually 5 ministries come up for discussion as for demand for grants. In the last decade, we've rarely discussed all 5 ministries. Even in this budget, we've hardly discussed, beyond the 2 ministries in the Rajyasabha, we haven't discussed anything, sir. So appropriation bill gives us an opportunity to discuss ministries that go beyond the scope of the demand for grants. That is why I said it could have been an appropriate platform for
members of parliament to scrutinize the expenditure that will be appropriated to various ministries, which was denied to them, sir. Sir, last Wednesday in the Lok Sabha, after 3 ministries were discussed, the rest was passed by applying a guillotine. I do appreciate, sir, 30 seconds, sir. I do appreciate the fact that guillotine is not something that Bharatiya Janata Party introduced, and it has been used in a way to, pass the financial bills. But, sir, I'd just like to bring to your notice and put it on record. In 2025, 90% of total budget expenditure passed without a discussion. In 2023, 100%, where 5 ministries amounting to 11 lakh crore was listed for discussion, but none were discussed. 2019, 25% of the bills that were up for... sir, just 2 seconds. In the Rajyasabha, only one of the 4 ministries were listed, only one was discussed. And in 2018, the entire expenditure was guillotined and passed without discussion. I would want to put it on record that we have seen that scrutiny of such bills and appropriation of such funds is hardly discussed, and I just wanted to place it on record. We need to have discussion on that. Thank you so much, sir. Thank you. Shrimati Nirmala Sitharamanji to give combined reply to the discussions on the Appropriation Number 2 Bill 2026 and the Finance Bill 2026. Thank you very much, sir. So this year's finance bill, since on the subject of the budget we've already replied, I'm taking the finance bill and the appropriation together. The finance bill was drafted with the reforms in mind. That reform express about which Honorable Prime Minister keeps referring to, the momentum on reforms has not come down at all. The finance bill also has elements of this reforms being pushed because we want India to be a lot more economically vibrant country. So that reform expresses what guided us to bring in very many elements into the finance bill so that it reflects the mood of the nation. The guiding principle has been inclusivity, and we have made sure that every section gets to benefit from an opening economy. The approach also has been to look at every law that is there, every regulation or notification which guides certain activities, with an intention of making sure that we decriminalize, and the regulation is a soft touch regulation. So the finance bill has gone into drafting these kind of regulations which are very, very onerous and almost punishing. And we've tried to bring that to only being a compounding or levying of penalty and so on. So this, with this intention, we have made also newer changes which have been brought in to, let us say, ease passengers when they're getting out of the country or coming in with the kind of things that they bring in. We wanted to give them a favorable treatment. So many provisions of the Customs Act which will be impacting on people who are traveling abroad have also been tweaked in favor of the passengers. We are also providing for a foreign assets disclosure scheme, updation of returns even after assessment, reassessment proceedings have commenced, and rationalization of passenger allowance, which is what I referred to a minute ago. Besides this, the Custom Administration has already begun the reform process, simplifying process. In fact, I've said it earlier in this House. In 1 year, that is 2025, the Department of Revenue undertook reforming the Income Tax Act of 1961, coming up with a new act which is simpler, easier to comply with, and is also seen in the forms that we are going to use for income tax returns filing. The same year, the Department of Revenue in September did one major reform of GST, as a result of which today the markets are a lot more buoyant. You are able to see people
buying things which they had postponed earlier because they were awaiting some kind of a change in the GST. Although from the time GST was launched till earlier than September 2025, we had already come down from 15.5 to about 11.2%. Post this, it has even touched 10, and probably in some items even lesser than 10. On an average, it's about 10. So you see that the Department of Revenue not only amended the Income Tax Act, but looked at customs, looked at GST, all within 1 year. A major reshaping of the tax administration has been taken up. So for small businesses and artisans, sir, I think it was right that we removed the export value limits on e-commerce, making it easier to sell globally. And also overall, replacing manual checks with digital, faceless clearances to ensure faster, hassle-free movement of goods. So I think overall, the approach has been to make it easier for people to do business. So without getting into too much of detail on the finance bill, which the Lok Sabha has passed, and we've come here to take the views of the honourable members here, I want to start responding to some of the observations made by honourable members. Sir, I've not so much related to the finance bill, but honourable member Vikramjit Sani, who's probably not here now, had commented saying our systems are getting stuck. We are making plans, but we are not able to execute it. What is promised in paper is not actually happening as delivered on the ground, and so on. I just want to refer the honourable member to the fact that we have brought in a single nodal agency system, which is a model for centrally sponsored schemes to improve spending efficiency by routing them through a dedicated and traceable account structure. So the fiscal public finance management system has gone through a thorough change, that it is now a transparent mechanism from where the money goes to the particular account head in a state government through a process called single nodal account SNA Sparsh. Actually ensures that money goes just in time to the accounts, and money is sent when the state government also puts its share, and without delay both together get to the ground. And therefore, when the utilization certificates come back to us, we give the next tranche, and so on. So no project waits for resources to come. Equally, we don't park money in programs in the states and say or periodically check up if the money is getting spent. Because after all, many of the projects and many of our expenditure is now based on borrowed money. We want to borrow just enough to take care of our work and not borrow much more and then keep paying interest. So this SNA Sparsh, in which all the states are on board, ensures faster release of funds, better visibility for utilization, and reduced parking of public money. So this push-based system that we've now brought in actually enables funds to go to the last mile, and it can be tracked and traced at any point in time, both by the central government and the local body, and also the central state governments. So this just-in-time has actually helped us. Now, we have not left it at that. In the budget documents, there is a statement 4AA, capital A, of the expenditure profile that we produce every time during the budget, which actually gives a comprehensive state-wise and scheme-wise breakdown of the actual releases that are made of funds for the centrally sponsored schemes. So it is not just digitally transparent for all of us to see state government, central government, and also the concerned department at the state level, but it is available as a document in every budgetary set of documents that we produce for all members to see it. So this system has actually helped us to prudentially use money without wasting it. Sir, I think Honourable Member Sanjay Yadav had spoken about decline in public sector employments
and employment opportunities, including in railways and defense. Sir, I think it's a bit ironic, sir, member, sorry for making a political statement, but sometimes it helps because the comments which are coming are also politically motivated, I feel. A member from RJD speaks about public sector employment and says, no, it's not happening. We cannot, the land, what is that, land for jobs recruitment scam? Yes. We are not doing that. We are not doing, give us land and therefore we'll give you jobs. It's all transparent, it's put out. And in fact, I will appreciate the railways for having come up with the annual recruitment calendar. 25-26 was already released, and at that time it started off, ensuring that youth no longer have to wait for a single notification to come. The calendar is already announced. And also, 18 Rozgar Melas under the leadership of Prime Minister has taken place since its launch in October 22. Like the way we periodically give Kisan Samman Nidhi for the farmers through direct benefit transfer. Here is a job, Rozgar Mela, which periodically appoints people publicly. Letters of appointment are given by ministers going and participating in different states, by Honorable Prime Minister himself standing up and saying, I'm giving this straight away. And that calendar keeps moving in a very dynamic fashion. So we are creating jobs, and it has resulted in public sector, Government of India, it has resulted in distribution of over 11 lakh appointment letters, publicly seen by everybody. And we are obviously giving jobs to the deserving, sir, not just for those who are giving us piece of land. We don't want the land. Nor are we picking up land for giving jobs. So, and also the recruitment drive is part of the Railways annual recruitment calendar, I said already. And that has been introduced in 2024 for Group C posts. So it is all publicly laid out. Railways and defense are openly, publicly recruiting and announcing the recruitment details as well. There is no hide and seek in that. Sir, Honourable Member Shakti Singh Gohil raised a lot of questions about new standard of the GDP numbers. The new standard to belittle previous numbers so that my number may look good, and in this series you have revised the GDP numbers to belittle the previous numbers. These are routine exercises in the government. I'll tell you the number of times Government of India has done this, and not randomly. It goes systematically, sir. 9 revisions since independence have happened. Governments of every political persuasion have done this. The first base year of 1948-49 was released in 1956 under Prime Minister Nehru's Congress government, followed by 1960-61, which was released in 1967, and 1970-71 base year was released in 1978 under the Janata Party government under Sri Morarji Desai. Rajiv Gandhiji's Congress government released the 1980-81 base year series in 1988, and Sri Vajpayee under the NDA government released in 1993-94 series in 1999. Dr. Manmohan Singh carried 2 revisions, releasing the 1999-2000 series in the year 2006 and the 2004 to 2005 series in 2010. The current outgoing 2011, the one which is going to be replaced by the latest series, the current outgoing 2011-12 series was released in 2015 under Prime Minister Modi, and now the 22-23 series has already been released. So this happens every 10 years. I'm sure Honourable Member Shakti Singh is not suggesting that every previous revision was to taunt the earlier governments. No, this is a process of governance. It happens under every government. So it gives us, it's not every time, I'm sure, and I confidently believe that every time it's not for belittling the predecessor governments. They are done.
because it has to be, the base has to be scientifically tested, statistically proved, and then kept on. So this new series, several new and improved data sources are being used to bring in granularity, accuracy, and reliability of the estimates. More than 300 data sources and about 1,400 variables are all used to make this GDP series, and it captures household sector information also, because now it uses the annual survey of unincorporated sector enterprises, ASUs as we say it, and the PLFS, the Periodic Labour Force Study Survey, are all used for better picture of the economy. Also now we have the advantage of the GST data, which shows where companies are operating, and their output is assigned to the right states accurately. So the data has now become a lot more comprehensive, lot more vibrant, and lot more true to the time in which the data is being extracted. The PFMS real-time data actually reduces errors. So you're not coming up with a number which probably will need a further correction, or the margin of error is higher. No, now you're able to get even better, avoids delays, and makes GDP estimates more accurate. So we are also using the e-Vahan, rail and air transport services data, and fuels related data, so that greater value is, we are able to estimate better value for the goods and services. So the new GDP series is actually reviewed, peer-reviewed by many observers of the Indian economy. They didn't have a reason to worry about it, but I want to request the member to have greater in-depth look into what has come out. So then, gender budget has been completely cut out, meaning removed or not even considered, is a view that Honourable Member Wilson has expressed. I just want to highlight, sir, overall allocation under gender budget has increased from 4.49 lakh crores in 25-26 BE to 5.02 lakh crores in BE 26-27. So within 1 year, BE to BE, there is this kind of an increase. In fact, this allocation is about 38% higher than the actuals of 24-25. So it's important for us to recognize, sir, but I don't know, I'm subject to correction, but about women, all party meeting was held, all our leaders participated, many leaders participated in it, all parties participated on this matter of women's reservation bill. Their views have been taken, government is planning to respond, and we want everybody's views to be taken. And in that meeting, DMK was not present. But here they're asking gender budget. If you're really concerned about women, why couldn't you attend that meeting along with the other party leaders? आप मीटिंग में नहीं आते, महिला के विषय में आप श्रद्धा नहीं दिखाते, मगर उनको लगता है कि जेंडर बजट का हमारे अमाउंट कम हो गया है. कहां कम हुआ जी, ऊपर से ज्यादा ही हुआ. Please take your seat. So, please. What not correct? You were not in the all-party meeting. Why not? Please take your seat. Yes. Were you present? Please. Were you present? Please take your seat. All-party meeting is a secret? Madam. Honorable Deputy Chairman say all-party meeting is where everybody is seated together. They were not there. I am highlighting that. Is it wrong or is it right? There can be only two. There can't be a grey area. I was in the wall, you didn't see me. You were not there. मान लो கரெக்டா இல்லையான்றது நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? நீங்க இல்லைங்க அந்த மீட்டிங்ல. அந்த மீட்டிங்ல நீங்க இல்ல. He was not there. Yes. He was not there. बोले मैडम, please. You continue. Sir, misleading is not the issue, sir. They were not there. It was an important meeting. All parties were represented. They were not there. Huh?
when all parties were called. You were not there. Keep asking now. Please. Right. Sir, I don't mind Congress party and others rising in support. I will give more. Now that it has come to this, I will talk about the status of women in Tamil Nadu. आप इसके लिए इतना तड़प रहे हैं और सब आपके लिए कॉमरेडरी दिखा रहे हैं. मैं महिला के हालात तमिलनाडु में वो बोलना चाहती हूँ. பெண்களோட நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிலைமை எடுத்து சொல்றேன். நீங்க கேட்டுக்காங்க. அதை பத்தி நீங்க மறுக்க முடியாது. Sir, leave me talking about it. One of the NGOs, leave me talking about it. An NGO which is based in Madurai did a study about what is happening in Tamil Nadu and about women in Tamil Nadu, and they said there is a steep rise of 40% in crimes against women in Tamil Nadu. You can argue with that as well. And this is based on 6 years of data, 2019 to 24, from 26 out of 38 districts. Women's situation in Tamil Nadu and gender budget के बारे में इधर रो रहे हैं. 26 out of 38 districts में महिला के हालात के ऊपर NGO के स्टडी बोलता है 40% इंक्रीज है क्राइम रेट में. उसके लिए आप प्लीज कुछ करो, क्योंकि I am also from Tamil Nadu and I want that state to be safe for women. Don't come and shed crocodile tears. महिला के लिए बजट कम हो गया, कम नहीं हुआ, मगर हालात उधर गंभीर है. तमिल சொல்றேன்ப்பா, இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன், ஹிந்திலயும் சொல்றேன், முடிஞ்ச மீதி 2-3-4 பாஷையிலும் சொல்றேன். உண்மையை ஒத்துக்கணும். நீங்க இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. பின்ன அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. Sir, this study team took 90 cases and it was shocking to note that only in 3 cases the accused were convicted. In rest they are all roaming free. பெண்களுடைய நீங்க எழுப்பினது நீங்க என்ன ஜெண்டர் பத்தி பேசுறீங்க, போய் சொல்றீங்க பட்ஜெட் பத்தி. So if in that 90 cases which have been studied, 98% of cases में अगर accused is roaming free and the court has not given any conviction in those 10 full years, take care of women in the state. Yes? மணிப்பூரை பத்தி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரே வந்து கொடுத்திருக்கார் ஸ்டேட்மெண்ட். நிராகரிக்க முடியாது உங்களால. Home Minister came and gave a statement here. Home Minister was there when the incident happened in Manipur. He sat in the camps. After that, for 3 months, MOS was sitting in Manipur. At one point in time, when similar thing happened in Manipur, the UPA government's minister did not even visit Manipur. Sir, if this is the way we have to talk, there are ministers in Tamil Nadu who have in public uttered such grossly unacceptable statement about women. ஆமா, நீங்க எலெக்ஷன் வச்சிட்டு தான் என்கிட்ட பேசுறீங்க, நானும் பேசுவேன். Sir, at least 4. I will stop with it, don't worry. There are at least 4. What is this? It's a response given. I'm shocked. Jairam Ramesh, I will bring in statements also for you. Of course I am. Please, yes. So there are 4 or 5 instances, sir. No, Finance Minister of India doesn't mean that I shouldn't talk about issues of women-related concerns. You ask me about Manipur, I will say about Manipur as well. So, sir, with the state and its ministers publicly stating things which are totally against women, this shedding of tears about gender budget is not acceptable at all. He's a senior advocate in Supreme Court. I respect Honorable Member Wilson. He should go into the details. What has been allotted, what is not, and then tell me gender budget has come down. Sir,
Again, I'm sorry, sir. GST-related wrong information. GST is an indirect tax. It is levied, whoever purchases an item, be him rich or poor, that tax is paid. But for the poor, for the commodities that they will buy, for the goods that they will buy, the GST Council has sat and discussed about it and decided that we'll have to further reduce for the sake of the common people. But I'm sorry, but if a rich man also has to buy soap, even he will have to pay the tax. I cannot say every shopkeeper, you make sure that when the richest man in the town comes, you make him pay 30%. Whereas when the poorest man comes, you pay 5%. Is that possible, sir? So I'll tell you how the poorest of the poor, whose essentials are being taxed nothing or less. In over 30 items, sir, I'm giving a list if you want, which are of use for everybody, poor people, construction workers, farmers, street vendors, or common Indian citizens who are not high net worth. Rice, wheat, pulses, that is dal, taxes exempt. GST nahi hai, exempt. Atta, maida, besan, GST exempt. Fresh vegetables, GST exempt. Fresh fruits, exempt. Fresh milk, curd, lassi, buttermilk, eggs, exempt. Fresh meat, chicken, fish, bread, jaggery, salt, papad, kajal, bindi, sindoor, kumkum, plastic, glass bangles, everything exempt. Contraceptives, vaccine, educational services, healthcare services, exempt, sir. Similarly, in the September meeting, we have added more items for exempt category. UHT milk, paneer, pizza bread, kakra, chapati, roti, paratha of various ways, South paratha, North paratha, all Indian breads, pencils, sharpeners, erasers, crayon, notebooks, individual health insurance, individual life insurance, and selected life-saving cancer medicines are all exempt. So I want honourable member to say, where is the GST? Really, if there are more items, the GST Council will consider. All are exempted from paying any GST. And in the 5% category, sir, where it is processed food coming in, sugar, tea, coffee, edible oils, cooking oils, butter, ghee, cheese, condensed milk, almonds, dates, dried fruits, clothing up to 2,500 per piece, are all under 5% category. ये कहाँ से rich के लिए, poor के लिए वगैरह आता है, sir? An indirect tax, nobody is in a position to implement for a rich man differently from a poor man. इसीलिए हम ये करते हैं कि poor खरीदने वाले essential items में कम से कम एकदम waiver ही दो. So how does it not benefit the poor? It's not discriminatory in that sense. So I'll come back to Honourable Member Shakti Singh Gohil, sir. Again on the cesses and surcharges, sir. I think I've answered this quite a number of times. Constitution gives the right for cesses and surcharges to be collected by the central government. Of course, it has to be for a purpose. It can't be, I collect it without stating the reason. And we'll have to be accountable for the money collected to be spent on that particular thing on which we have said we are collecting. And if the concern is we are collecting but we are not spending, I can appreciate it. But we are collecting but also spending. And not just what is collected, sometimes even more. This data has been given several times, sir. I would again highlight, states are the ultimate beneficiary of the cesses that we collect, whether it's for education, health, or roads, and so on. So just the numbers, two numbers. Between 2014-15 to 26-27, the latest available figures, overall major cess collections, excluding crude oil and GST compensation, sir, the collection was, and I still call it estimate,
23.34 lakh crores. And those which are included are agriculture, infrastructure development cess, health, education cess, road and infrastructure cess. Against this, the utilization is estimated to be 24.28. 23.34 collected, 24.28 lakh crores expended, sir. So we are spending more than what we have collected in cesses and surcharges. 104% is what I can say is being utilized. So concern of Manya Member Shakti Singh Gohil should be addressed by this response. Sir, I think again, there was a very important question. How will the government ensure fiscal deficit at 4.3 in 2026-27 in view of the reduction in excise duties announced on petrol and diesel? The current situation about which we announced. I can't see the honourable member who asked it, Saket Gokhaleji. I want to say, sir, union excise duty is one of the multiple sources of revenue to the government and contributes under 10% of the gross tax revenue estimated to be collected the forthcoming financial year. So mobilization of additional resources, prioritizing on growth-induced expenditure, better targeting of welfare expenditure, and also greater transparency in fiscal operations have been significantly the hallmark of our government. And I think we will, following the same pattern, we'll be able to keep the government's fiscal stance carefully managed. Also, there will be efforts to have greater mobilization through non-tax revenues. So I appreciate the member for having asked a question which is of relevance today, and we shall be on our toes, if I can say that way. So again, what is India's crude policy? What is the government doing during these times is a question asked. But I want to just highlight through comparing our situation with the rest of the countries around us. Globally, sir, first of all, international crude oil prices, have surged from 70 per barrel dollars to 122 per barrel, $122 per barrel within just 1 month. That's kind of an increase driven by this West Asia conflict, particularly because of the disruptions in Strait of Hormuz. Brent crude has not dropped below $100 since March 13. So consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world by 30 to 50% in Southeast Asian nations. दुनिया भर के increase हो रही है और Southeast Asian nations में 30 to 50% increase हुआ है. 30% in North America. जी. Please, माने please, not please, let her speak, please, आप बोलो. Please, डांगी जी सीट पर बैठकर नहीं बोलते, आप जानते हैं. जवाब दे रही हूँ. Anticipate करके मुझे मेरे मुंह बंद ना करना. मैं जरूर जवाब. Sir, so in this context where the prices have gone up, 30% to 50% in Southeast Asian countries, 30% in North America, 20% in Europe, 50% in African countries is the increase. And since the last 4 years, after the Russia-Ukraine conflict, there's been severe stress in terms of the oil, fertilizers, and therefore we are carefully managing. And the Prime Minister's one single guidance is, जनता हमारी नागरिक के ऊपर बोझ ना पड़े. There should not be a burden on the citizen of India. That's been the guidance given to me, and we are managing carefully. This morning, the announcement which is made, government has issued, purposely I'm getting into the details, and then I'll move to say a few more things. Government has issued a notification
cutting petrol excise duty from 13 to 3 per litre, a reduction of 10 rupees. Diesel duty was removed entirely, dropping from 10 to 0, 10 rupees to 0. No waiting period, no phased rollout. Immediate effect from today. The results, sir, petrol and diesel retail prices in India remain completely unchanged. We have not increased. On the contrary, the government is taking the burden, making sure the oil marketing companies will ensure buying more and doing supply and keeping the supply uninterrupted. Actually, this is actually making sure that the volatility outside, both of the cost and of the supply constraints, does not hit the ordinary citizen. Price remains unchanged for the citizen, and that is what I want to make clear here. We are making sure that people of India don't suffer. Similarly, sir, there are standalone refineries, all of whom are bringing the crude, refining, and sending out refined products, various types of products, to countries abroad, making their business, earning well, and so on. On them, we have put this restriction that we have taken a massive hit on our taxation revenues to ensure very high losses of oil marketing companies, approximately 24 rupees per litre for petrol and 30 rupees per litre of diesel. At this time of sky-high international prices are reduced. Simultaneously, sir, an export tax has been levied so that international prices of petrol and diesel have skyrocketed, and any refinery in India exporting to foreign countries will now have to pay this export tax to the government. So those refineries which are sending products which are refined should make them be available for Indian citizens first before they export. So export करके अच्छा कमाना अच्छा है, ठीक है, मगर आज के हालात में एक्सपोर्ट करके आप कमाना सिर्फ अच्छा नहीं है, मगर आप अगर एक्सपोर्ट करना है भारत के लिए अवेलेबल करो, पहले हमारे लिए सप्लाई इंश्योर करो, बाद में आप एक्सपोर्ट करो, मगर एक्सपोर्ट करने के समय हमारे लिए 24 रुपीस पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 30 रुपीस पर लीटर ऑफ डीजल के लिए आपका लॉस को सरकार भरपाई कर रही है। सो सप्लाई का भी इंतजाम हो रही है, रेट ना बढ़ाने के लिए भी इंतजाम हुआ है आज सिर्फ एक अनाउंसमेंट के वजह से। और कल रामनवमी, इसके बावजूद भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुला करके इसके ऊपर चर्चा करके निर्णय लिया कि जनता को ये सुविधा दे। Normally we are told you don't need to compare with other countries. एक बार हमें बोला भी गया कि देख लो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बांग्लादेश में कितना हो रही है, हम तो इधर एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, एफडीआई भी नहीं ले आ रहे, ऐसे करके उस समय एकदम कंपैरिजन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह। मैं उसी रास्ते पर चलते हुए आई वांट टू से दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? 200% hike on high octane fuel is happening. 20% hike on petrol and diesel overnight हुआ है. Petrol now is sold at 321 rupees, Pakistani rupees a litre. And this is a reported news. I am not sourcing it from somewhere else. Smart lockdowns announced in Sindh province so that their fuel can be conserved. Restricting movement, gatherings and public events down to plus one more paper is reported even from Pakistan. Schools are shut for 2 weeks. Government offices have moved to 4-day working week. Private offices told to shift 50% staff to work from home. हम ये तो नहीं कर रहे हैं सर, मगर गलतफहमी फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि there will be lockdown. कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलतफहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में।
Sir, markets and shopping centers are ordered to be closed by 9:30 p.m. पाकिस्तान में इधर हो रही है क्या? ऐसे कुछ नहीं है. और बांग्लादेश का हालत देखिए सर. मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ वो कष्ट में और दुख में है. No, I'm not saying that. Matter of fact comparison के लिए बोल रही हूँ. उन देशों को अभी हमारी तरफ से जो भी मदद अगर मांग रहे हैं वो सब हम करते जा रहे हैं. गुड नेबरली रिलेशंस के लिए हम कर रहे हैं. All universities shut down and shifted to online learning in Bangladesh because electricity nahi hai. 5-hour rotational power cuts happening, implemented for domestic consumers in the city Dhaka. Fuel station across Dhaka closed due to shortage of octane and diesel. So हालात हर देश में ये मिडिल ईस्ट का वॉर के कारण बिगड़ा हुआ है. हम मैनेज कर रहे हैं जिससे हमारे नागरिक को कोई दिक्कत ना हो. I can go further, sir, but I'm just saying the contrast in price, I want to say, India, nothing has changed. Whereas in Pakistan, plus 20% to plus 200% price, depending on petrol, diesel, high octane, whatever. Bangladesh has rationed, stations closed, supply cut 10 to 15%. Excise duty action, we have cut rupees 10 per litre. None of them have responded. Schools, I told you about schools, offices, markets, power supply, and so on. So, India, among this neighborhood countries, is maintaining a level of stability. And किसी भी हालात में हमारे नागरिक के ऊपर कुछ दबाव ना हो, इस मकसद से ऑनरेबल पीएम हम सबको आदेश दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग समय समय पर. सो देशवासियों को हम पॉजिटिव मैसेज देना और एकजुट रह करके इस परिस्थिति से बाहर आना चाहिए. So I would appeal to all honorable members to look at that the government is active and responding to the rapidly changing situation. Sir, one very relevant issue to tax administration, sir. Honorable Member Wilson has raised it. He says tax authorities can reopen past year cases without limits. Why? First of all, I want to say, sir, that's not correct. There is a limit of 5 years for which past assessments can be opened. Beyond that, they cannot. Cases can only be reopened, even then, I want to say, cases can be reopened only if the escaped income is 50 lakh or more. Matlab, you didn't declare 50 lakh, we got to know, and that is what we'll reopen the case only to that limited amount which has escaped assessee's attention or has come to the notice of the tax administration. And it protects the small and medium taxpayers because we have only put 50 lakh and above, otherwise no. There are of course many other facts which can go, but simple answer is we don't open accounts beyond 5 years. So largely I think I've addressed the issues raised by honorable members, sir. I request the House to consider and return the finance bill. Honourable members, I shall now put the motion regarding consideration of the appropriation number 2 bill 2026 to vote. The question is that the appropriation number 2 bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favour will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4 and the scheduled stand part of the bill. Those in favour will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 4 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favour will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned.
Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Sir, एक minute. I'll please. I shall now put the motion regarding consideration of the Finance Bill 2026 to vote. The question is that the Finance Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill, clauses 2 to 161. And the first to sixth schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 161 and the first to sixth schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Bill is over now. Sir, bill is over. Bill is over. I have nothing to say on the bill. It's just a matter of information. The Honorable Finance Minister of India informed the House that there was an all-party meeting on the Women's Reservation Bill. Now, it is a fact that the Congress Party and other opposition parties have been demanding an all-party meeting after the 29th of April because there is an election going on right now in 5 states. I want to categorically state there has been no all-party meeting till now. Thank you, Mane Sansadiya Mantri. Unexpected expression of the views by Jairam Ramesh ji to this August House. I have from the day one told Jairam ji and his colleagues, including the leader of opposition, that government intends to enter into consultation with all parties. Whether it's all party together, please let him finish this. Whether it is all party in one table or parties one by one, this is a methodology adopted. Please let him speak. This is Please let him speak. This is an option exercised by the government. Now I expect the Congress Party not to dictate the government how to conduct a process of consultation. Secondly, let me clarify. Yes, he's clarifying it. Manya Minister is clarifying. Nothing is going on. And sir, yes, and clarify, please. And please. All the honorable Congress members who are speaking today, they were not part of those meetings, so they would not know how the meeting took place and in what manner. Secondly, sir, the Congress Party is the let him please. Congress Party is the only political party which is not coming forward and also demanding an all-party meeting. I have written a letter yesterday to the Congress President, who is the leader of opposition in the Rajyasabha. I would still appeal that instead of raising the issue, only limited appeal is no need to. Jairam Ramesh ji is behaving unusual today. Please, आप बोले आपकी बात है. सर वो बहुत विचित्र व्यवहार दिखा रहे हैं आज. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसे बात करेंगे. इसमें वित्त मंत्री ने जो बात यहाँ कही है मैंने सुना नहीं,
लेकिन ये बात सही है कि पार्टियों के साथ बैठक हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई है, एनडीए पार्टीज का भी सामूहिक बैठक हुए है और बाकी अन्य विपक्ष पार्टियों से भी हमने बैठक की है। यहां में जो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ भी हमने बैठक की है। There was let Wilson ji, let him speak. And DMK, Mr. Wilson, who is here, he was part of the DMK delegation. आपके लिए नहीं बोले, अरे कांग्रेस वाला को इतना तकलीफ काहे को हो रहा है? आप बोले प्लीज। तो इसीलिए सर यहाँ सदन में रिकॉर्ड में आपने बात रखी है, मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि पार्टियों के साथ हमारा बैठक कंसल्टेशन प्रोसेस ये तो बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है, आप तो वेलकम करना चाहिए। हम आपके पूछे बगैर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए। इतना अच्छा हमारा व्यवहार है सरकार का, वो ही सामने में नहीं आ रहे और पत्र सिर्फ लिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? इसलिए यहाँ मिसलीड ना करें। Now special mentions श्रीमान राग्या कृष्णैया special mention not present. श्रीमान प्रमोद तिवारी जी not present. श्रीमान एस सेल्वागन वेथी not present. श्रीमान निरंजन बीसी not present. Dr. Sikandar Kumar ji, a special mention demand for conversion of the Hamirpur, Sujanpur, Palampur road into a 4-lane highway. Sir, my special mention is on demand for conversion of the Hamirpur, Sujanpur, Palampur road into a 4-lane highway. सभापति जी, मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, सुजानपुर, पालमपुर सड़क मार्ग की समस्या के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमीरपुर और पालमपुर हिमाचल प्रदेश के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इनके बीच सुजानपुर से होकर गुजरने वाला मार्ग न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हजारों लोगों की दैनिक जीवन रेखा भी है। वर्तमान में बढ़ती यातायात की भीड़ और संकीर्ण सड़कों के कारण इस मार्ग पर 4 लेन का निर्माण समय की मांग बन गया है। सुजानपुर का एक ऐतिहासिक मैदान और पालमपुर के चाय बागान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। बेहतर सड़क संपर्क से पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी, कृषि उत्पादों और अन्य सामग्री को मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। वर्तमान में संकरे मोड़ों और भारी ट्रैफिक के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। 4 लेन तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मरीजों को हमीरपुर या पालमपुर ले जाने में वर्तमान मार्ग पर बहुत अधिक समय लगता है। 4 लेन बनने से आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं त्वरित मिल सकेंगी। हमीरपुर, सुजानपुर, पालमपुर मार्ग को 4 लेन में बदलना क्षेत्र के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मेरा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि जनहित में इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इस मार्ग को इसी वित्त वर्ष 4 लेन में परिवर्तित किया जाए, ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। थैंक यू। Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Sir, I rise to speak over the concern over devastating fire at Dastakar Nature Bazaar. Sir, a devastating fire broke out at Dastakar's Nature Bazaar, basically which has stalls that have handloom as well as handicrafts, and they are from Indian weavers coming across the states, in south of Delhi on 16th March 2026. It gutted over 40 stalls just hours before the market opened for the ongoing Bonanza Bazaar crafts exhibition. So the Dastakar Nature Bazaar is a private non-profit
organization has been working since 1981 to support Indian traditional craftspeople and today works with over 1 lakh artisans across rural India. So, as per the official statement of the organizer, goods worth more than 5 crore were destroyed, severely impacting artisans from across states such as West Bengal, Nagaland, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Kashmir and Rajasthan. While no casualties were reported and the blaze was brought under control after over 90 minutes, the remaining days of the exhibitions were cancelled, depriving artisans of crucial peak season income. So, India has 7 million artisans. They earn $3.4 to $4.5 daily in cities. Otherwise, in villages, they end up earning only 89 cents, which is barely subsistence. So, only 34% have consistent wages. Despite being the backbone of a rural economy and cultural heritage, this sector faces disorganization, limited capital, poor technology access, absent market intelligence, and weak institutional frameworks. When a single fire wipes out a year's earnings for vulnerable artisans, government intervention becomes essential and necessary. So I urge the government through you, sir, to assess losses, provide emergency financial relief to compensate for destroyed inventory, offer rehabilitation support, including concessional working capital loans, and conduct fire safety audits at all major handicraft exhibition venues nationwide. Artisans are the custodians of centuries-old skills that once lost cannot be revived. Thank you so much, sir. Thank you. Shriman Subhash Barala ji. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने बहुत ही मुझे एक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में जिन युवाओं की नियुक्ति ग्रामीण डाक सेवक के पद पर हुई, उनकी पोस्टिंग देश के विभिन्न राज्यों में दूर दूर स्थानों पे की गई है। इसके कारण उन्हें और उनके परिजनों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी पोस्टिंग अथवा ट्रांसफर उनके गृह राज्य में करने पर विचार किया जाए, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके और वे बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं दे सकें। धन्यवाद। Thank you. Shriman Yeram Venkata Subba Reddy ji, not present. Shrimati Sulota Deo ji, not present. Shriman Shakti Singh Gohil ji. धन्यवाद महोदय। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने एमबीबीएस कॉलेजों के लिए एक नए मानक यूजीएमएसआर 2023 जारी किए, जिसमें श्वसन रोग, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी, चेस्ट को अनिवार्य विभाग सूची से हटा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप नए मेडिकल कॉलेजों में श्वसन रोग के विभाग रखना अनिवार्य नहीं रहेगा। एमबीबीएस छात्रों को टीबी, अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियों का विशेषज्ञ प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इन कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को पल्मोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं रहेंगे। आईपीएचएस 2022 में भी जिला अस्पतालों के लिए श्वसन रोगों के विभाग शामिल नहीं किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी टीबी और सबसे आम पुरानी बीमारियों में अस्थमा और सीओपीडी का इलाज करने वाला विभाग को शिक्षा और सरकारी अस्पतालों दोनों से हटा दिया गया है। श्वसन रोग विभाग के फिर से बहाल क्यों करना अनिवार्य है? क्योंकि 1. भारत में दुनिया में सबसे अधिक टीबी रोगी है। जो विभाग टीबी का निदान और उपचार करता है, उसे हटाना माननीय प्रधानमंत्री जी की टीबी उन्मूलन योजना 2025 लक्ष्य को सीधा कमजोर करता है। 2. श्वसन रोग, अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, फेफड़ों का कैंसर, स्लीप एपीनिया, ओपीडी,
और भर्ती के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। इनका उपचार विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा होना चाहिए, सामान्य चिकित्सक द्वारा नहीं। 3, नए मेडिकल कॉलेजों में विशेषकर ग्रामीण एवं छोटे शहरों में श्वसन रोगों की कोई सुविधा नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी, स्पाइरोमेट्री, एनआईवी जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से ये मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू। श्रीमान तेजवीर सिंह जी। धन्यवाद महोदय। मैं देश के लाखों अभिभावकों की चिंता से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है निजी स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस समस्या। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और शिक्षा को अधिक सुलभ एवं आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद आज कई निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है। केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि एडमिशन फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट और अन्य शुल्कों के नाम पर अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई अभिभावक मजबूरी में कर्ज लेने तक को विवश हो रहे हैं। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं बल्कि समाज के निर्माण का आधार है। यदि यही इतनी महंगी हो जाएगी तो समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ जाएगा। अंत में मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सख्त नीति बनाई जाए। फीस संरचना पारदर्शी हो और अभिभावकों की शिकायतों के समाधान हेतु मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाएगी और अभिभावकों को राहत प्रदान करेगी। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान निरंजन बीसी जी। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak in an urgent public importance regarding need to strengthen the National Commission for Scheduled Tribes in our country. Sir, I seek to draw attention of the Government of India towards the functioning of the National Commission for Scheduled Tribes, a vital constitutional body entrusted with safeguarding the rights and interests of our tribal communities. The National Commission for Scheduled Tribes has been established under Article 338A of the Constitution of India with the mandate to investigate, monitor, and evaluate all matters relating to safeguards provided for scheduled tribes. The Commission is vested with power of civil court in matter of inquiry, including summoning witnesses, requisitioning documents, and receiving evidence on affidavits. As of late 2023 and early 2024, 4 posts out of 5 key constitutional positions in the National Commission for Scheduled Tribes remain vacant, including the chairperson, vacant since June 27, 2023, the vice chairperson vacant since 2019, and 2 members' position. This has severely affected the decision-making capacity and institutional effectiveness of the Commission. Further, out of a total sanction strength of 124 posts, over 70 positions remain vacant, including critical posts like director, research officer, law officer, accounts officer, and superintendent of police. The Commission is functioning at less than 50% capacity. Significantly,
hampering its ability to conduct investigation, address grievances, and ensure justice for scheduled tribes in our country. Therefore, sir, I urge the Government of India to take necessary steps to fill all vacant positions for strengthen institutional capacity and empower the National Commission for Scheduled Tribes to effectively discharge its constitutional responsibility across the country. Thank you, sir. Jai Samvidhan, Jai Birsa. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 30th March 2026.